वही तो होता है, नो नॉइस ओनली सक्सेस। हैप्पी, बहुत हैप्पी। चलो अब आप भी अगले साल, मतलब आई एक्सपेक्ट यू टू बी इन द सिलेक्शन लिस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो स्टार्ट करते हैं, करें? नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो लेट्स प्रोसीड, एंड प्लीज always there has to be sincerity in your work. Whenever there is a sincerity in work, there will not be any problem. तो ऐसा करना। तो अब देखो आज का प्रोग्राम क्या है। We'll see what is movement of a force, then what is couple, then after seeing this we'll see parallelogram law of forces. उसके बाद देखेंगे क्या बोलते हैं, basic concept of free body diagram. And don't think that free body diagram can be explained without touching questions. No. So what I do is I'll give you the basic idea of free body diagram. Then that idea or that concept we start applying to various numericals. I think in this chapter I'll be doing around 40 numericals, different varieties of numericals. सारे अच्छे variety questions हैं. Based on that you'll get an idea of how to draw a free body diagram. Please don't think that sir free body diagram होगा क्या? नहीं, free body diagram start वो चलते ही रहेगा till the end of engineering mechanics. Free body diagram will go on. उसका कोई end नहीं है. Okay sir? Okay sir? Okay, चल। सर फोर्स का सेंस, हाँ नहीं, इट इज द डायरेक्शन। सेंस मतलब कौन से सेंस में है। चलो आगे बढ़े। सर कैन वी से कोप्लेनर, कोलिनियर as concurrent forces as they pass through a point with, yes they pass through line of action, exactly. So चलो आगे बढ़ते हैं सर। now let's proceed, do not waste time now। moment of a force, movement of a force। Please, concepts are important. I have told you very clearly, force has two effects। नहीं, हाँ, movement of force के बाद ही again will bring on। I have told you very clearly, force has two effects। One, it can translate, for example, look at carefully। One, it can translate, it has a tendency to translate। The second, बताइए सर, बताइए, the force can translate, मतलब force can move this object, and the second is it can rotate। Great। So there are two effects of force, and that rotation, देखो sir, body is moving, so with this force it is capable of moving, with this force it can move like this, we can tell, but we need to quantify that rotation, how much capacity it has to rotate। ये तो quantity चाहिए ना। If the magnitude of that rotation, मतलब that, if the magnitude of that quantity is more, then I say the tendency to rotate is more। If the magnitude of that point is less, the tendency to rotate about that point is less। If the magnitude of that quantity is zero, it has zero tendency to rotate। Great। Now question, please listen to us। Question, there is an object, look at carefully, there is an object, now you tell me, I apply a force like this, what is its tendency to rotate? What is its tendency to rotate? Zero। Why sir? Why sir? Very simple sir। एक observation देखो, एक बात देखो सर, एक बात देखो, ध्यान से सुनो। Let me apply a force like this, let me apply a force like this, let me apply a force like this। So let us write this as F1, F2, F3 and F4। okay, यहाँ पे मान लो हम एक छोटा सा हिंज बना लिए, जो भी है सपोर्ट है। You tell me, in which case the tendency to rotate is more? In which case the tendency to rotate is more? Someone said F4। Great। क्या मतलब हुआ सर? It is observation, it is just an observation। What is science? Natural laws, nature से हम observe कर रहे हैं। So when a force is purely in the axial direction, what is the perpendicular distance between this force and the point of application? The point of application is this, point of application is this। इसी point से पास हो रहा है, कोई perpendicular distance है? बिल्कुल नहीं है सर। समझ में आ रहा है सर? इस फोर्स का कंपोनेंट बोल रहा हूं, इस फोर्स का कंपोनेंट बोल रहा हूं मैं। एंड व्हाट अबाउट दिस? यस, दिस फोर्स हैज टू कंपोनेंट्स। यू नो हाउ टू रिजॉल्व द फोर्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स मैं तो बताया था आपको। आई सेड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, लुक एट सर, दिस इज, आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली, फोर्स कैन बी रिजॉल्व्ड इन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर coordinate systems। For example, let this be x, let this be y, and this is our force F। Very good, and this angle is theta, let us say। Now can I resolve this force into two components? Yes, why not? One is, dear students, one is this, the other is this। What is the direction of this? इसका डायरेक्शन क्या है? It is to the right। What is the direction of this? It is in the upward direction। Please note down that ये जो एरो है यहाँ पे है, प्लीज माफी चाहता हूँ, ये जो एरो है यहाँ पे है, तो इसको लिखूंगा मैं Fy और इसको लिखूंगा मैं Fx। अब बताइए सर, व्हाट इज Fx? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। Fx अपोजिट इज साइन, ये F का साइन कंपोनेंट और ये F का, ये क्या है? कॉस कंपोनेंट। वेट सर, वेट, F का कॉस कंपोनेंट,
Exactly. Wonderful, sir. Wonderful. Now, देखो सर आराम से देखो. So this force can also be written as, let me write this as Fx I, because it is in the positive x direction, plus Fy, y is in the upward direction. So therefore Fyj. Is there any problem? Everyone knows force is a vector quantity. That's why I have expressed force in vector form. I have expressed force in vector form. Is there any difficulty, sir? Is there any difficulty? So this Fx can be written as F cos theta, this Fy can be written as Fy sin theta. There is no problem, we have written. This is known as resolution of forces. And if these two are the forces, it can be composed into a single force. मतलब अगर आपके पास different forces है, those forces can be composed into a single force, which we call it as resultant. Common sense देखो, like this, like this. If these are two sides, the closing side is in the opposite. देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है. Closing side is in the opposite direction. So definitely this is the resultant. Can we write this as Fx plus Fy? Mistake मत करना. This is not algebraic summation. It is vector summation. It is vector summation. This is the, अगर ये vector A और ये B है, तो this is A plus B. Till now, is there any problem, sir? What I have observed is when the component of this force perpendicular to the line of action, इस line से perpendicular component जब बढ़ रहा है, rotation is increasing. When there is no perpendicular component, इस force का perpendicular component along the line of action zero है, तो there is no rotation. So clearly समझ में आ गया सर, which component is responsible for the rotation? It is the perpendicular component which is responsible for rotation. That's why movement is nothing but force into perpendicular distance. Movement is nothing but force into perpendicular distance. So if the value is more, the tendency to rotate is more. If that value is more, the tendency to rotate is more. इसलिए हम क्या ले रहे हैं सर? इसलिए we are not taking complete force, the component of that force about the point where you want. Now stop. Stop us. Cool. आराम से, आराम से. ध्यान से सुनो सर. कूल रहो आप, कूल रहो आप. देखो, हमने पढ़ा था, प्लीज कूल रहो. हमने पढ़ा था बचपन में, वेक्टर्स में पढ़ा था. If A is one vector and B is another vector, the dot product of these vectors is, applications दूंगा सर, please first you listen, then I'll explain everything. The dot product of these vectors is given by magnitude of A, magnitude of B into cos theta. What is theta? The angle between two vectors. This is the dot product. ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है. नाउ लेट्स सी द क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? इधर देखना, A क्रॉस B. मैं फिजिकली एक्सप्लेन करूंगा सर, फिजिकली आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, क्योंकि ना वेक्टर्स का फिजिकल एक्सप्लेनेशन आई गिव यू, डोंट वरी, अभी दूंगा. नाउ इटसेल्फ इट इज A B sin थीटा n क्या. ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या कोई वेक्टर है सर? यूनिट वेक्टर ऐसा कुछ है नहीं है. सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर, whereas the cross product is a vector, अब ये समझ में नहीं आया सर मुझे. सुनो, क्या समझ में नहीं आया? पूरा आएगा. अब एक 3 मिनट दीजिए. हाँ, 3 मिनट दीजिए. हाँ, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है सर, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है नीतीश डियर, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है. You talked about distance, nothing similar to that. No, observe here. अब इन क्या होगा? It is the unit vector perpendicular to the plane containing these two vectors. सर कुछ समझ में नहीं आया सर. वेरी गुड सर, वेरी गुड सर. सर कुछ समझ में नहीं आया सर. वेरी गुड सर, वेरी गुड सर. मैं हूं ना सर, मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ना ये हम 11th में पढ़े थे, लेकिन कुछ सब भूल गए. चलो अब स्टार्ट करें सर, अब स्टार्ट करें सर, अब स्टार्ट करें. अब देखो, प्लीज सुनो केयरफुली, प्लीज सुनिए सर, आराम से. यू जस्ट गिव मी 3 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स. देखो आएगा सर, आएगा सर. सर चुपचाप बैठा. I said just listen to me. I said just listen to me. सब आएगा सर, और वो भी खुश, बहुत खुश होंगे आप. मान लो सर, इट्स माय प्रॉमिस, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. इट्स माय प्रॉमिस. देयर इज अ पॉइंट. Look at carefully. There is a point. There is a point. And let us assume that at this point a force is acting like this. ऐसा ले लेंगे. एक पॉइंट है, there is a point. At that point the force is acting like this. अरे there is a particle. There is a particle. उस पार्टिकल पे एक फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा है. Is there any problem, sir? Is there any problem, sir? Is there any problem, sir? और एक बात बता रहा हूं सर, और एक बात बता रहा हूं सर, आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं. सुनो, प्लीज सुनिए. I said just listen to me. I said just listen to me. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. All these are fundamentals, लेकिन याद जब आएगा, जब आप कंफ्यूजन में रहेंगे तब याद आएगा. सर ये क्या कर रहे हैं सर? इट्स माय प्रॉमिस. आज मोमेंट ऑफ फोर्स को you live with it. It's my promise, sir. It's my promise. ज्यादा एग्जैगरेट कर रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि that much stuff I am going to give you, इसको कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं मैं. सुनो सर, अब देखो ध्यान से. You will get everything, don't worry. मान लो एक फोर्स ऐसा है, मान लो एक फोर्स ऐसा है. सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट इधर ले लेंगे. एक सेकंड. एक फोर्स ऐसा है,
It is in the first quadrant. Yes or no? It is in the first quadrant. It is in the second quadrant. It is in the third quadrant, and it is in the fourth quadrant. Great. कभी भी याद रखना. This is my positive x-axis. 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 कभी भी याद रखना. We have to follow some conventions. The convention is the angle is always measured पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कन्वेंशन है वो. अगर ये मत पूछना कि सर ऐसा ही क्यों, अरे यार दुनिया पूरा फॉलो कर रहा है, आप ऐसा फॉलो करो, मेरा क्या जा रहा है, अकेले रहेंगे, हम सब एक रहेंगे, आप अकेले रहेंगे. सो वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, सो लेट अस फॉलो द वर्ल्ड कन्वेंशन. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इधर देखो, दिस इज माय थीटा. इधर आइए, एवरीवेयर इट इज सेम. ये सी लाइन से होगा, इसी लाइन से, एंड दिस इज आवर थीटा. दिस इज आवर थीटा. दिस इज आवर थीटा. देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दो आंसर देता है. इमेजिन, जस्ट अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ फोर्स दैट वी गॉट इज सम 30 न्यूटन. लुक एट केयरफुली, लुक एट केयरफुली. द वैल्यू ऑफ फोर्स दैट वी गॉट इज 30 न्यूटन. अज्यूम दैट, बहुत केयरफुली सुनो सर, अज्यूम दैट दिस एंगल इज, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, अज्यूम दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री. और एग्जाम में दो आंसर्स दे रहा है, सुनो केयरफुली. ऑप्शन ए 30 न्यूटन एट 30 डिग्री. ऑप्शन बी 30 न्यूटन एट 330 डिग्री. C, some 50 Newton at 30 degree, and D, 50 Newton at some 330 degree. ऐसा कुछ आंसर दिया, तो कौन सा ले लेंगे सर आप आंसर? डेफिनेटली आप तो ये कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ना इट इज इजी टू कैलकुलेट. ये कंपोनेंट ये आएगा. सो यू विल ऑप्शन ए, आपको 30 लिखेगा, ये देंगे. लेकिन इट इज रॉन्ग. लेकिन इट इज रॉन्ग. सर इतना माइन्यूट डिटेल्स बता रहा हूं सर आपको. सो प्लीज लुक एट, इट इज मेकिंग विद पॉजिटिव. दिस इज 3. अगर ये टोटल 360 है, टोटल 360 से 30 निकालना, सो इट विल बी 330. सो दिस इज द राइट आंसर सर. कुछ समझ में आया सर? कुछ समझ में आया सर? एंड वन मोर थिंग आई कैन से, फ्रॉम द ओरिजिन व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ x. इधर देखो, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ x फोर्स? पॉजिटिव. तो कैन वी राइट fx इज पॉजिटिव. व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ fy भी ऊपर जा रहा है. सर ये क्या बोलते हैं, लेस देन नहीं रे, ये एंगल है रे, एंगल है रे, ये लेस देन नहीं बेटा, ये लेस देन नहीं, एंगल है रे, ये लेस देन नहीं रे, ये एंगल है रे बेटा, ये एंगल है रे, ये एंगल 30, ये एंगल 30, ये एंगल 30, ये एंगल 30. समझ गए ना? समझ गए ना? ये लेस देन नहीं है, 30 न्यूटन है और एंगल 30 है. ये लेस देन नहीं, एंगल है. अब नहीं, कोई नहीं, व्हाई आर यू लाफिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर लाफिंग. डेफिनेटली जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं ऐसे लिखा, तो डेफिनेटली डाउट आएगा कि सर ये लेस देन है क्या? आएगा. प्लीज ऐसा मत करो आप, किसी पे हंसना गलत बात है सर, ये इट्स नॉट करेक्ट. प्लीज ऐसा मत करो आप. वो उसका डाउट है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है. प्लीज डू नॉट लाफ. एक के डाउट पे अगर हंसेंगे तो आपका रियल कैरेक्टर बाहर आएगा. प्लीज ऐसा मत करो. सुनो, अब ध्यान से सुनो सर. ये आई थिंक देयर इज नो. इधर बताइए सर, व्हाट इज x कंपोनेंट? एनीवन इन द क्लास? x का वैल्यू क्या है? देखो, x का वैल्यू क्या है? ओरिजिन से x का वैल्यू क्या है? लेफ्ट नेगेटिव. ओरिजिन से f का वैल्यू क्या है? ऊपर. fy इज प्लस. ओरिजिन से एनीवन fx नेगेटिव. fx इधर जा रहा है, ओरिजिन से ये लेफ्टवर्ड जा रहा है, कंपोनेंट्स अगर लेंगे नेगेटिव. ओरिजिन से एक इधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सो देयरफॉर इट इज नेगेटिव. एंड ओरिजिन से fx इधर देखो, ओरिजिन से fx राइटवर्ड जा रहा है, तो पॉजिटिव. एंड ओरिजिन से ये नीचे जा रहा है, इट्स गोइंग डाउन, सो इट इज नेगेटिव. सो बेस्ड ऑन दैट आई कैन टेल वेदर द फोर्स, फॉर एग्जांपल, इफ द फोर्स इज समथिंग लाइक दिस, लुक एट केयरफुली. 3 न्यूटन, सॉरी, ऑल इन न्यूटन. द फोर्स इज गिवन बाय 3i plus 5j. किस क्वाड्रेंट में रहेगा सर? किस क्वाड्रेंट में रहेगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट. बिकॉज़ व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? Anyone, you know the magnitude. Magnitude, ये तो वेक्टर है. मतलब इस फोर्स का x component is 3, y component is 5. What is the resultant? Resultant is 3 square plus 5 square. So this is equal to 9 plus 25 root 34. ऐसा हम कर लेंगे. So इधर आइए सर, come here. minus 6i plus 8j. What does it mean? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है. लेकिन फोर्स को देखते ही I can easily get what is the direction, what is, समझ में आ गया ना? Is it okay? Similarly, if I want the angle, ध्यान से सुनो सर. If I want the angle, आप बताइए सर, what is this? Anyone? इसका x component ये हो गया. Sorry, y component. इसका x component. Can we write this as fx? क्या मैं इसको fx लिखूंगा और क्या मैं इसको fy लिखूंगा? अरे यार, इसको fy लिखूंगा, fy इसको fx. So आप बताइए, what is tan theta sir? What is tan theta? Tan theta is fy by fx. So I can easily find the angle with which the vector is making with respect to positive x axis. मैं angle easily find out करूंगा. Is there any difficulty? No difficulty. हम सारी चीजें डिटेल में करेंगे सर, इसका कोई चिंता नहीं है. ये फोर्स सिस्टम समझ में आया सर? किस क्वाड्रेंट में है, क्या मीनिंग है, समझ में आया सर सभी को? Have you followed? अभी तक हम till now we know that force is 100 newton, 60 newton, 40 newton. But if I write 3i plus 8j, sir ये force ऐसा मत करो, वेक्टर फॉर्म में लिखे हम. So if you want the resultant under root of this square plus this square, is it okay? पहले मैं 2d कंप्लीट करूंगा, उसके बाद 3d में जाऊंगा. Is it okay sir? First let me complete all 2d cases. चलो leave it. इधर आइए सर. What is the topic that you are discussing? Moment of a force. अब ब्यूटी आएगा देखो. First you tell me, why are we calculating moment of a force? अब आज समझेंगे आप, आज समझेंगे. सर आप क्यों इतना मेहनत किए थे एंगल फाइंड आउट करने के लिए?
सर आप इतना मतलब द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, व्हाई यू हैव स्ट्रगल्ड, आज समझेंगे सर, आज ब्यूटी समझ में आएगा आपको। हम ये कलर ले लेंगे रे, देखो देयर इज अ पॉइंट, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रे, एक सेकंड रे, देखो अब देखो प्लीज, हाउ विल यू फाइंड एंगल इन अदर क्वाड्रेंट। इधर देखो क्या दिक्कत है सर, इसमें कुछ नहीं है। अगर ये ट्रायंगल लिए, लिसन सर, अगर ये सुनो केयरफुली, अगर ये ट्रायंगल लिए, व्हिच ट्रायंगल आर यू टेकिंग, लुक एट सर, आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल, I'm taking this triangle. So tan theta is equal to this by this. First you take only values, no sign. So tan theta is this value by this value. Tan theta is opposite by this. ये आएगा. So once this angle is known, can't I find out this angle? Similarly in this triangle, you find out this angle. How do I find out this angle? Tan theta is this by this. I get this angle. Once this is known, ये angle आ गया, तो क्या करेंगे? 180 minus this angle. करेंगे या नहीं? सब करेंगे सर, don't worry. लिमिट आराम से सर, लिमिट कोई बात नहीं सर, जो भी है आप पूछते जाना, डाउट से मत जाना सर, हम सब केसेस करेंगे सर। नाउ देयर इज अ पॉइंट, ध्यान से सुनो सर, देयर इज अ पॉइंट, लेट अस से द पॉइंट इज डेसिग्नेटेड एज O. लेट मी डेसिग्नेट द पॉइंट एज O. ओके सर, लेट मी डेसिग्नेट द पॉइंट एज O. वेरी गुड, इधर देखना, देयर इज अ फोर्स F acting like this. कोई डिफिकल्टी है सर? कोई डिफिकल्टी है सर? इज देयर एनी डिफिकल्टी? नाउ आई वांट द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट। अरे ऑरिजिन को O ले लेंगे सर, और इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को A ले लेंगे, कोई दिक्कत है सर? दिस द पॉइंट ऑफ, व्हाट डू आई वांट द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट, मतलब ये फोर्स इस पॉइंट पे कितना घुमा सकता है, वो कैपेसिटी चेक कर रहा है। लेट मी रिपीट सर, आई एम चेकिंग द कैपेसिटी ऑफ दिस फोर्स, द कैपेसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज नथिंग बट व्हाट इज द कैपेसिटी, इट्स समथिंग लाइक दिस माय डियर फ्रेंड्स। आई हैव अप्लाइड, देखो बहुत केयरफुली देखना, दिस इज द डोर, दिस इज द हिंज, ये हिंज है, देखो ये हाथ हिंज है, ये पूरा हिंज है। नाउ आई एम अप्लाइंग फोर्स हियर, सो आई एम चेकिंग व्हाट इज द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट। किस पॉइंट पे रोटेट हो रहा है वो, इस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे। सो आई एम चेकिंग व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस फोर्स टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट। दिस नहीं आया समझ में, आया या नहीं आया रे? So useless fellows, what does moment of a force represent? It is the capacity of that force to rotate about a particular point. देखो. Will the moment of a particular force be same about all points? मुझे बताओ सर, क्या आप डोर को हिंज के पास रखे रोटेट करो? क्या आप डोर, सुनो कुछ ला रहा हूं सर मैं, the concept of fixed vector ला रहा हूं मैं, concept of fixed vector आएगा देखो. So if I apply force at the hinge, will it rotate? हिंज कभी भी याद रखना, हिंज से थोड़ा दूर और दूर, सो जैसे आप जा रहे हैं, capacity of that to rotate is increasing. So when someone asks you in interviews what is the physical meaning of moment of a force, you should tell that quantity represents what is the capacity of that force to rotate about that particular point. देखो about that particular point, जब भी एक particular point बोलूंगा तो फिक्स हुआ नहीं हुआ, when I say about a particular point फिक्स हो गया। देखो नहीं आ रहा सर, समझ में आया नहीं? Have you followed it? अब देखो सर, ध्यान से सुनो, कुल एक काम करो, I want aim. What is the aim? Anybody in the class, what is the aim? To find the capacity of F to rotate about O. कुछ मत करना सर, इस पॉइंट पे आपको मूवमेंट कहां पे चाहिए? इस पॉइंट पे। फोर्स कहां है? यहां है। दिस इज द पॉइंट ऑफ जस्ट जॉइन। Can I say this is the point of application of force? Force यहां अप्लाई किए, प्लीज लिसन, फोर्स यहां अप्लाई किए, लिसन राइट, फोर्स यहां अप्लाई की, बोलो सर, बोलो रे, फोर्स को मैं ऐसे लूंगा, तो इजी करने के लिए मैं फोर्स को ऐसे लूंगा। डोंट थिंक दैट आई एम चेंजिंग, जस्ट एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कर रहा हूं सर, एक इजी अंडरस्टैंडिंग के फोर्स कैन बी इन एनी डायरेक्शन। ओके, व्हाट डू यू वांट? द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट, कहां पे चाहिए? इसको मैं लिखूंगा अबाउट पॉइंट O, इसको M को लिखूंगा। इज इट ओके सर? देखो ब्यूटीफुली देखो, व्हाट इज द पोजीशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहां है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहां है? इज इट A? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स A, एंड इस फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट पे चाहिए। आई वांट द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट। वेयर इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? A, उसका पोजीशन वेक्टर निकालो, यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पोजीशन वेक्टर OA। कैन बी राइट दिस एज, देखो R is nothing but OA vector. Any problem sir? Any problem sir? अरे नमूने, it is a position vector, it is a vector, it is also a vector, yes or no? ये भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। How do I find the angle between vectors? How do I find angle between the, चुप,
How do I find angle between vectors? Your teacher has given a beautiful concept. Your teacher has given a beautiful concept. Point of intersection say, देखो देखो, is it moving outwards? Is it moving outwards? Is this, yes, ये बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है. तो can I say this is the angle between? Can I say this is the angle between vectors? Can I say this is the angle between vectors? Can I say this is the angle between vectors? अब देखो सर, मुझे बताओ सर, अगर ये फोर्स पूरा इसी डायरेक्शन में होता, had this force been completely in this direction, अगर मेरा फोर्स पूरा इसी डायरेक्शन में होता, तो इस फोर्स का इस पॉइंट पे मूवमेंट क्या होगा? Let me repeat my dear friends. If this force is completely in this direction, if this force is completely in this direction, what is the moment of this force about this point? शून्य, zero. It means this force has two components. Cool. So अगर इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो क्या क्या आएगा सर? If I resolve these forces into two components, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक अलग दूसरा ले लेंगे सर. ये ले लेंगे. देखो, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, करेक्ट और नॉट? करेक्ट और नॉट? करेक्ट और नॉट? इसका एक कंपोनेंट और इसका इधर आएगा. नहीं आया किसी को समझ में? एंड दिस इज अबाउट 90 डिग्री. हैव यू फॉलोड सर? अरे यार देखो, इस फोर्स का, डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं एरो ऐसा लिख रहा हूं. देखो, इस फोर्स का एक कंपोनेंट, आई एम रिजॉल्विंग दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज इन दिस डायरेक्शन, वन इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन. तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा, देखो ये, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा. डाउट है तो देख लेना. ये दोनों का रिजल्टेंट क्या है? लाइक दिस ऑर्डर ट्रायंगल, लाइक दिस, रिजल्टेंट शुड बी द ऑपोजिट डायरेक्शन, लाइक दिस. दीज टू आर, ये ऑरेंज वाले दे आर टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स. ये फोर्स के कंपोनेंट. सर इसमें हेड एंड टेल से नहीं कर सकते क्या? बोल, मैं वही तो कर रहा हूं ना सर. इसका हेड इसके टेल से कर रहा. कैसे स्टूडेंट है? मैं वही कह रहा हूं, इसका हेड इसके टेल से ही कर रहा हूं ना रे. सो देखो, द हेड इज हियर एंड द हेड इज जॉइंड विद द टेल ऑफ दिस, एंड वही तो कर रहा हूं ना सर. क्या है? सो वही तो कर रहा हूं ना सर. आई डोंट अंडरस्टैंड. इसलिए मैं बोल रहा हूं. देखो, मैं जब ट्रायंगल लिखा, कैन यू सी दिस एरो? ये नहीं दिख रहा है, ये एरो नहीं दिख रहा है, इसलिए एरो यहां पे शो किया. डोंट आस्क मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन. आई टोल्ड दिस 1000 टाइम्स. सर गड़बड़ कर दिया सर. आई हैव रिजॉल्व्ड दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज इन दिस डायरेक्शन, अदर इज इन दिस डायरेक्शन. इज इट ओके? Is it okay? Now you tell me, what is this component? Anyone in the class? ये component, ये देखो opposite है, इसका opposite है, तो this will be sin theta. ये इसके लिए ये adjacent है, this will be f cos theta. Is f cos theta responsible for the rotation? Is f cos theta responsible for rotation? Is f cos theta responsible for rotation? No. Which one is responsible for rotation? इसका मतलब देखो, देखो रे, f cos का पॉइंट, ये मत सोचना कि सर फोर्स यहाँ पे आएगा. नहीं, फोर्स तो यहीं पे है. तो इसका मतलब if I resolve the component of this is here, देखो देखो, don't say that force is here. No, force तो यहीं पे है. इसका कंपोनेंट एक इधर होगा, and this is f sin theta. So f sin theta into this length OA. So OA into f sin theta. कब आएगा सर आपको? कब आएगा? You will get only sin theta. कब आएगा? Only when you take cross product. Only when you take cross product. इसका मतलब moment is a vector quantity. तो सर ये भी समझ में नहीं आया. वेट करो सर. सब आएगा. ये सब क्यों कर रहा है? Don't worry at all. मुझे ना ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए. प्लीज बताइए. नहीं, why do you use free vector? देखो, यही तो गलतियां करते हैं आप लोग. वेट करो रे, कुछ नहीं आया तो चुपचाप बैठो. सो आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग सर? प्लीज टेल मी, इज इट ओके? कुछ मत करना. दिस इज द पोजीशन वेक्टर. इधर देखो, दिस इज द पोजीशन वेक्टर. सर ये सब हम कंफ्यूज हो रहे हैं सर. आप जो भी कॉन्सेप्ट था वो गड़बड़ कर दिया सर. कोई बात नहीं सर, मैं बोल रहा हूं आपको. व्हाट आई एम सेइंग इज आपको मूवमेंट लेना आता है? मैं बताता हूं. मूवमेंट इज व्हाट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. व्हाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस? बिकॉज़ दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज रिस्पांसिबल फॉर द रोटेशन. तो कैन आई रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स? क्या मैं इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं सर. ये कंपोनेंट होगा, इधर देखो, ये इसका कंपोनेंट होगा एक ऐसा, इसके परपेंडिकुलर, और एक होगा ऐसा. एटलीस्ट ये ठीक है सर? क्या ये ठीक है सर आपको? अरे बोलो रे. वन इज नहीं आया सर समझ में. अरे व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रिजॉल्विंग दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स. इज इट ओके? Is it okay? तो ये इसका ये कंपोनेंट इनटू दिस. तो ये कंपोनेंट अभी तो बताया ये क्या है सर? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू क्या? f sin थीटा इनटू r. ऐसा कुछ मत करो सर. मैं आपको एक सिंपल वे में बताता हूं. सो प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली. एक सिंपल वे में बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. सो द मोमेंट ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कैसे वेक्टर क्वांटिटी? अब देखो, व्हाट इज द सेंस? मैं अब बताता हूं. अब देखो सर, लिसन केयरफुली. प्लीज लिसन केयरफुली. अब आएंगे, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड सर. डोंट वरी. ये इनका बताओ. इधर देखो, देयर इज अ फोर्स. You don't have to worry. मैं हूं ना. You don't have to worry. अब प्लेन मीन सब बताऊंगा. इधर देखो, क्लियरली देखना. इधर ये है, देखो. अब ये फोर्स
इस पॉइंट पे ये फोर्स इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है सब, किस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अरे ये भी नहीं आ रहा आपको, चलो ये एक सेकंड मुझे पता है सर आप इतना वीक है, कुछ एंगल देने से कंफ्यूज हो रहा है। लीव इट आप, मुझे पता है सर जीरो से जाना जरूरी है आपके लिए। इधर आइए, इधर आइए। अब ये बताओ, ये जो फोर्स है ना इस पॉइंट पे, प्लीज लिसन, ओके, इन विच डायरेक्शन इट इज ट्राइंग टू रोटेट, इन विच डायरेक्शन इट इज ट्राइंग टू रोटेट, देखो इन विच डायरेक्शन इट इज ट्राइंग टू रोटेट, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। देखो ये फोर्स क्लॉकवाइज आप ले लो ऐसा, तो ये दोनों फोर्स किस प्लेन में है सर, देखो ये पोजीशन वेक्टर, देखो ये पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज दिस, क्या मैं इसको मोमेंट आर्म बोल सकता हूं, ये पोजीशन वेक्टर को सुनो केयरफुली, लुक एट, इसको बोलता हूं मोमेंट आर्म, देखो मोमेंट आर्म नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं, इधर देखो मोमेंट आर्म, देखो ये जो पोजीशन वेक्टर है, ध्यान से सुनो सर, सुनो केयरफुली, कूल रहो, ये जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे सेम पोजीशन वेक्टर आई एम शोइंग बाय दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, एनी प्रॉब्लम सर, एनी प्रॉब्लम सर, एनी प्रॉब्लम। अब दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दिस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो ये फोर्स क्या करने की कोशिश कर रहा है सर, क्लॉकवाइज, ये दोनों फोर्सेस किस प्लेन में, दोनों वेक्टर्स किस प्लेन में है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस द फोर्स वेक्टर, बोथ आर इन दिस प्लेन, बोथ आर इन दिस प्लेन। अब दोनों का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर किधर होगा सर, दोनों का, ये x है ये y है, ये x है y है, तो z होगा, मतलब इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस इन दिस आउटवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड, नहीं आया समझ में, अबाउट z, सो देयरफॉर सेंस है या नहीं रोटेशन का, अब बताइए, डू यू हैव सेंस ऑफ रोटेशन और नो सेंस ऑफ रोटेशन, डेफिनेटली इट हैज सेंस ऑफ रोटेशन। वो देखो दरवाजा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, सो इफ देखो एक बार केयरफुली देखो, इज द डोर पुल आउट, इधर देखो, इफ आई अप्लाई लाइक दिस इट मे मूव आउटवर्ड्स, इफ आई अप्लाई लाइक दिस इट मे मूव इनवर्ड्स, मींस सेंस ऑफ रोटेशन इज इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए वो वेक्टर है, मूवमेंट इज अ वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये n बोला था मैं, n क्या बोला था सर, लिसन, व्हाट इज दिस n, इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग, ये एक वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है, ये दोनों इस प्लेन में है, तो n क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर दिस, ये फोर्स और ये यूनिट वेक्टर, सॉरी दिस पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स का दोनों इस प्लेन में है, दोनों का नॉर्मल परपेंडिकुलर क्या है, z, सो इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस। देखो अगर क्लॉकवाइज है तो अंदर आ रहा है, इधर देखो प्लीज लुक एट, इफ इट इज क्लॉकवाइज अंदर आ रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, सो देखो एक बार प्लीज लिसन केयरफुली, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उधर आ रहा है, इधर आ रहा है, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर क्लॉकवाइज है तो अंदर जा रहा है, वो नेगेटिव लेते हैं। तो आज से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर टेकन एज नेगेटिव अनलेस एंड अंटिल आई से वर्ल्ड इज फॉलोइंग दिस। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। तो अब देखो आज ब्यूटी मिलेगा सर, अभी नहीं हुआ सर, अभी कुछ मत बोला, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, मेरे लिए 2 मिनट रुको, सो यू लव इट। इधर देखो सर, प्लीज लुक एट केयरफुली, अगर ये देखो नो इन विच डायरेक्शन इज रोटेटिंग, इधर देखो क्लॉकवाइज, तो ये थंब किधर जा रहा है, देखो z एक्सिस अंदर जा रहा है, z एक्सिस, अगर ये क्लॉकवाइज है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, ये बाहर आ रहा है, मतलब बाहर या अंदर इज इन z डायरेक्शन, z का मतलब क्या है, k, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव के में आएगा, पॉजिटिव के आर, अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव के में आएगा। प्लीज लुक एट केयरफुली, इफ यू आर गेटिंग मूवमेंट वेक्टर नेगेटिव इट मींस इट इज क्लॉकवाइज रोटेशन, इफ यू आर गेटिंग मूवमेंट वेक्टर पॉजिटिव इट मींस एंटी क्लॉकवाइज। तो मूवमेंट वेक्टर लेके प्लस के, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस यू आर गेटिंग, फॉर एग्जांपल इधर देखो आई एम गेटिंग मूवमेंट वेक्टर एज -25 k, व्हाट डज इट मीन, it is 25 न्यूटन मीटर जो भी यूनिट है in the clockwise direction. If I am getting 37 k, what does it mean, what does it mean, what does it mean, it is anti clockwise। समझ में नहीं आया सर, समझ में आया नहीं, समझ में आया या नहीं रे, इसीलिए इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, देखो मूवमेंट अबाउट ओ इज इक्वल टू, फर्स्ट पोजीशन वेक्टर लिखना, पोजीशन वेक्टर लिख दे, क्रॉस ऑफ फोर्स, बस। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, इधर देखो ये दोनों किस प्लेन में है सर, दिस पोजीशन वेक्टर एंड एफ आर इन विच प्लेन, ये दोनों किस प्लेन में है सर, बोथ आर इन विच प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई नहीं आया, बोथ आर इन एक्स वाई प्लेन, तो रोटेशन किस पे आएगा सर, रोटेशन किस पे आएगा, z एक्सिस, मतलब यहां पे k मिलेगा आपको, यहां पे k मिलेगा, सो इट मींस इट इज r f, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं सर sin थीटा, यहां पे n कैप का मतलब क्या है, हियर इट विल बी k, हियर इट विल बी k, समझ में आया सर, प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स हैव यू फॉलोड। तो sin थीटा क्यों आया सर, sin थीटा तो which component is responsible, which component is responsible sir, ये वेक्टर बाहर जा रहा है, देखो इधर से बाहर जा रहा है, so position vector is going outward, force is going outward, this is the angle, so can I say, so if I resolve this into two components, अगर मैं इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं, इस फोर्स को एक आएगा इधर, इसका फोर्स इधर और इसका फोर्स इधर आएगा, तो which component of this force is responsible, मतलब एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है, तो क्या नहीं राइट, ये अपोजिट है तो sin, this is f sin theta and this is f cos theta, तो is it responsible, no, f sin theta, that's why f sin theta into r f sin theta into r, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इस एक्सिस पे हो रहा है, इस एक्सिस पे, इसलिए ये आएगा। प्लीज बताइए आर वी क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, that's why we take cross product, तनुज आपको समझ में आया या नहीं आया, तनुज आपको समझ में आया नहीं, सर ये सब हम कंफ्यूज हो गए, काहे को, वेरी गुड सर, ये बोल रहा है वाई लाइक दिस, राजवीर थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखो, यू नो a क्रॉस b एंड b क्रॉस a आर नॉट इक्वल, इज द वेक्टर फॉलोइंग कम्यूटेटिव, एक एडिशन नहीं बोल रहा मैं, क्रॉस प्रोडक्ट, a क्रॉस b b क्रॉस a, दे आर नॉट सेम सर, दे आर नॉट सेम सर, इज pdv vdp सेम सर, इज pdv vdp सेम ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम से नहीं ना, दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग r क्रॉस f, यही तो मिलेगा आपको, यस
ये नेगेटिव आएगा। आप देखो, मैं आपको इसका ब्यूटीफुल एग्जांपल बताऊंगा। आर यू रेडी सर? मैं इसका एक ब्यूटीफुल एग्जांपल बताऊंगा। लेट मी सॉल्व वन क्वेश्चन इन 3 वेज। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 3 वेज। तो जिसको जिसको समझ में नहीं आया अब आएगा, अब आएगा। जिसको जिसको समझ में नहीं आएगा अब आएगा। एटलीस्ट यू टेल मी, हैव यू फॉलोड सर? एटलीस्ट यू टेल मी, हैव यू फॉलोड? एटलीस्ट यू टेल मी, हैव यू फॉलोड? आई एम वेरी सॉरी सर। देखो, आपको अगर वेक्टर में नहीं दूंगा, सिंपली बोलूंगा तो आएगा, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा देता तो तब क्या करेंगे मैं बताता हूं सर। सो क्लियरली टेल मी, हैव यू फॉलोड सर? अब एक गोल्डन पॉइंट बताने जा रहा हूं सर। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन गोल्डन पॉइंट। व्हाट इज दैट गोल्डन पॉइंट? थोड़ा थोड़ा सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज। एक सेकंड आ गया ना? ये कब पता चला साइन कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल? ओनली व्हेन यू न्यू द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जब एंगल बिटवीन वेक्टर्स पता है तभी तो साइन आएगा। नहीं तो आप क्या करते थे? सुनो सर, नहीं तो क्या करते थे सर? सुनो रे, अदरवाइज व्हाट हैव यू डन? देखो मैं बताता हूं। अगर ये है, अगर ये एफ है, तो ये एंगल ले लेते। साइन कहां आता है? बी केयरफुल सर, बी केयरफुल, बी केयरफुल सर। ओके नाउ सर, आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज बताइए, आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं कुछ ब्यूटी दिखाऊंगा सर आपको, एंड प्लीज बी विथ मी फॉर 10 to 12 मिनट्स। 10 to 12 मिनट्स मेरे साथ रहिए सर, एंड यू आर गोइंग टू विटनेस समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यू आर गोइंग टू विटनेस समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। कसम से बोल रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं। आप 10 मिनट मुझे दीजिए, आपको पता चलेगा कि होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है। प्लीज कैन यू गिव मी 10 to 12 मिनट्स? कहीं मत जाना सर, उसके बाद आपको जाना है तो जाओ। देखो फिजिकली एक अपलोड कर रहा हूं, एक फाइल। यस राहुल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर फोर्स XZ प्लेन में होगा तो रोटेशन Y में होगा, अगर फोर्स YZ में होगा तो रोटेशन X पे होगा। दैट्स इट, दैट्स इट। देखो अब मैं बताता हूं सर, प्लीज किसी को अगर एक पॉइंट भी समझ में नहीं आया कोई चिंता मत करना सर। इफ यू हैव नॉट फॉलोड इवन अ सिंगल सर, इट वाज y डॉट इज टेकन इन बिटवीन। डॉट इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन। देखो मैग्नीट्यूड है रे। अब देखो प्लीज, ये देखो, प्लीज सी द क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 3 वेज। सर इतना सिंपल क्वेश्चन को 3 वेज में क्यों करेंगे? आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 3 वेज। ऑल ऑफ यू आर रेडी? कुछ मत करना, थिंक दैट वी नो नथिंग, थिंक दैट वी नो नथिंग, हमें कुछ नहीं आता है। अब देखो सर, एक सेकंड रुको। किस पॉइंट पे मूवमेंट चाहिए सर? अबाउट ए। प्रीवियस केस में द मूवमेंट वाज अबाउट, in previous case the movement was about, in previous case the movement was about O। मतलब O से जहां पॉइंट है फोर्स की तरफ वेक्टर खींचो। नहीं आ रहा सर समझ में? O मतलब यहां पे मैं O is this, A is this, समझ में आया सर? अरे नमूने, मैं O is this। अब देखो पोजीशन वेक्टर खींचो, पोजीशन वेक्टर खींचो। कहां से? जिस पॉइंट पे मूवमेंट चाहिए वहां से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसी डायरेक्शन में जाना, उल्टा मत जाना। सो एट व्हाट पॉइंट यू वांट, एट व्हाट पॉइंट यू वांट हियर, वहां से फोर्स की तरफ जाना, वहां से फोर्स की तरफ जाना। पोजीशन वेक्टर देखो, वहां से फोर्स की तरफ जाना। सर यहां पे एरो नहीं दिख रहा, इसीलिए मैं यहां पे लिखा अल्लू, इसीलिए मैं यहां पे लिखा सर एरो यहीं पे है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम सर? तो कैन आई राइट दिस एज आर? कैन आई राइट दिस एज आर? अब देखो सर, प्लीज आपके लाइफ के 10 मिनट दे देना, कुछ नहीं मांग रहा मैं आपसे, भीख मांग रहा हूं 10 मिनट का, उससे ज्यादा नहीं। देखो, देयर इज वन थ्योरम नोन एज वैरिग्नॉन्स थ्योरम। ये क्या बोलता है सर? आई एम टॉकिंग अबाउट कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर। देखो वैरिग्नॉन्स थ्योरम, और इट इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्या बोलता है सर? ये थ्योरम ये बोलता है, ध्यान से सुनो, थोड़ी देर इसको निकाल दूंगा सर मैं। सुनो सर, ध्यान से सुनो। ये पहला है सर, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लूंगा मूवमेंट पे, वेक्टर फॉर्म में करेंगे हम। लेकिन वेक्टर फॉर्म में करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ना। देखो एक बार, व्हाट इज वैरिग्नॉन्स थ्योरम? दिस थ्योरम सेज दैट, फर्स्ट हम थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे सर। थ्योरम का स्टेटमेंट, व्हाट इज वैरिग्नॉन्स थ्योरम? दिस थ्योरम सेज दैट if a body is subjected to system of forces, फिर से बता रहा हूं सुनो, if a body is subjected to system of forces, what do we mean by system of forces? मतलब there are many forces। हम कोप्लेनर की बात कर रहे हैं सर, 2D की बात कर रहे हैं सर, समझ में आया? This theorem says that can I reduce all forces into a single force? Yes, I can do. What is the principle? Composition of force. What do we mean by composition of force? हम सारे forces को, all forces are converted into single force. One student asked me a question, sir, till now you have not explained as to how to convert various forces into a single force.
Why do you worry? I'm there to convert it now. But right now you have an idea कि there is a possibility, there is a technique to convert different forces, force system into a single force, which we call it as composition of force. एक काम करो सर, सुनो carefully, बहुत carefully सुनो. Different forces are acting. Different forces are acting. बहुत सारे फोर्स, इधर देखो, एक ऐसा एक्ट कर रहा है. यहां पे मुझे मूवमेंट चाहिए. Can I find the moment of all these forces about this point? Yes. कैसा? इसका moment about this, इसका moment about this, इसका moment about this, इसका moment about this. I can calculate. This theorem says that first you find the resultant of all. First you find the resultant of all. चलो मान लो मैं इसका रिजल्टेंट कुछ फाइंड आउट किया, इस सबका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम बताएंगे. इसका रिजल्टेंट मिल गया. आ रहा है या नहीं आ रहा सर? इसका रिजल्टेंट आ गया. Varignon's theorem says that the moment of the resultant force about that point is equal to moment of all these individual forces about the same point. मतलब individual forces के moments about particular point calculate करो, individual force लेके moment, total moment calculate करो, resultant का moment calculate करो, about the same point, it will be same. आ रहा है या नहीं आ रहा सर? आ रहा है या नहीं आ रहा सर? प्लीज बताइए, आर वी क्लियर? सो वही है ना अल्लू, वही composition is nothing but finding the resultant. Why is he asking? I don't understand. ये अल्लू का प्रॉब्लम क्या है? Composition is nothing but मैं converting all into single बोला, वही resultant कोई composition बोलते हैं, वही बोलते हैं. Is it okay, sir? Is it okay? So please understand, my dear students. Please understand, my dear students. What does Varignon theorem say? It says that the moment of this individual force about this point plus individual force about this point plus individual force about this point plus it is moment of this force about this point, you add, you get one moment. You convert all into a resultant moment, resultant force. You find out the resultant force of this about this point. The moment of this resultant force about this point is equal to individual moments of this about this point. That is known as Varignon's theorem or principle of moments. Have you understood? What does Varignon's theorem say? It says that the moment due to the resultant of various forces about the particular point. लेकिन in both the cases that about the same point, don't change the point. First I'm giving you theory, उसके बाद practical questions. Is it okay, sir? What is Varignon's theorem? What is Varignon's theorem? It says that it is principle of moments. It says that the moment of various forces, the total moment of various forces about a particular point is equal to moment of the resultant of those force about the same point. आप individually कैसा करना है मैं बताऊंगा ना सर. Why do you worry? कैसा करना है मैं बताऊंगा सर. इसका moment, इस resultant का moment, इस resultant का moment, इस resultant का moment यहाँ लीजिए और individual forces का moment यहाँ पे लीजिए. Both will be same. Is it okay? अच्छा, please write the statement. Okay, I'll write, sir. Wonderful, sir. Please write the statement. Let me write the statement. इधर देखो. Varignon's theorem. According to this theorem, sum of the moments of individual forces, sum का मतलब addition, sum of moments of individual forces about a particular point is equal to the moment of the resultant of all these forces about the same point. Is it fine now? Is it fine now? Is it fine now? अरे मैं गलत काम किया सर. I want this area to work. I want this area to work. आप ये इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी कर लो. I am removing this. या फिर मैं ऐसे करता हूं. हमारे पास कुछ जुगाड़ है ना रे? Is Varignon's theorem clear? Is Varignon's theorem clear? Clear. अब देखो सर, ध्यान से सुनो. Is it a single force? Is it a single force? Yes, it is a single force. क्या मैं इस फोर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं सर? Can I divide this force into components? Can I divide this force into components? Can I divide this force into components? Yes, sir. Divide करो. देखो एक सेकंड. Let me divide. What are the components? इधर देखो सर, इधर देखो. Let me divide. क्या कलर लेंगे? रेड कलर ले लेंगे. इधर देखो सर, इधर देखो. So what will be the x component? देखो, x component will be like this. What will be the y component? It will be like this. You are not getting the point. अरे यार, please my dear students, listen. एक फोर्स ऐसा है सर. ये कितना फोर्स है सर? ये फोर्स है 700 न्यूटन है. अब ये एंगल दिया है. This angle, wait. This angle is given as 45 degree. Can I divide this force or can I resolve? Don't use the word divide. Can I resolve this force into two components? Yes, एक component होगा right होगा. ऐसा राइट होगा क्योंकि ये इस देखो कॉमन सेंस देखो, इस पॉइंट से ये किस तरफ जा रहा है सर? इस पॉइंट से राइट जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल का राइट होगा. इस पॉइंट से ये नीचे आ रहा है तो वर्टिकल तो नीचे होगा.
अगर ये ऐसा जा रहा है तो इस पॉइंट से ये ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाएगा, इस पॉइंट से ये राइट जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल ऐसा होगा, अगर ये ऐसा जा रहा है तो इस पॉइंट से ऐसा जा रहा है तो वर्टिकल नीचे होगा, हॉरिजॉन्टल राइट होगा। इज इट क्लियर मेरे स्टूडेंट्स? एटलीस्ट हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसा होगा सर? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट? इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा। कॉमन सेंस देखना, दिस इज fx, दिस इज fy। कॉमन सेंस देखना, कॉमन सेंस देखना, दिस ट्रायंगल लाइक दिस, ये दोनों का रिजल्टेंट देखो लाइक दिस, एरो एरो लाइक दिस, एरो एरो, क्लोजिंग शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। आगे देखो, अब ये बताओ सर व्हाट विल बी दिस? ये फोर्स का कंपोनेंट ले लो, अपोजिट इज sin थीटा, अपोजिट इज sin थीटा, इट इज f sin 45। fx, व्हाट इज fx? ये sin है, fx क्या है? f cos 45, f cos 45। वेट, तो कैन आई राइट दिस हॉरिजॉन्टल एज f, व्हाट इज cos 45? 1/√2। What is sin 45? What is sin 45? Vertical. F sin 45. What is sin 45 by √2? Already F is given. Wait. F is given 700. तो आपको लग रहा होगा why he is taking so much pain? You will understand the beauty in just 3 to 4 minutes. देखो, what is F? Can we write this as F is 700 by √2? Can we write this F as 700 by √2? Is it okay, sir? Is it okay, my dear students? Is it okay? अब देखो, carefully देखो. Now, ये रहेगा क्या सर? अब बताइए, ये रहेगा क्या सर? ये रहेगा क्या सर? इसको स्प्लिट किए रहेंगे, आप रिजॉल्व दिस इनटू कंपोनेंट्स। विल दिस बी देयर? ये नहीं रहेगा सर। कौन सा कलर है? नहीं, ये व्हाइट, हां व्हाइट सही रहेगा, ये निकल जाएगा। सो ऑलरेडी आई हैव रिजॉल्व दिस। एनी प्रॉब्लम सर? इज देयर एनी प्रॉब्लम सर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? द फोर्स इज इन न्यूटन एंड डिस्टेंसेस आर इन मीटर। अब ये नहीं रहेगा। नाउ यू टेल मी what कॉमन अलजेब्रिक फॉर्म में करेंगे सर, अलजेब्रिक फॉर्म में करेंगे, नो वेक्टर फॉर्म, फर्स्ट अलजेब्रिक फॉर्म, क्योंकि हमें आदत है अलजेब्रिक फॉर्म में करने का। सुनो केयरफुली, what is the moment of this force? About this force, क्या मैं इसको देखो स्लाइड कर सकता हूं? फोर्स इज अ स्लाइडिंग वेक्टर, फोर्स इज, देखो एवरीथिंग इज कांसेप्ट, फोर्स इज अ स्लाइडिंग वेक्टर। इधर देखो, ये फोर्स को इधर लाना। what is the moment of this 700 by √2? It is a sliding vector, तो इस पॉइंट पे मोमेंट क्या होगा? देखो, ये horizontal distance is given as 1.2 meter. What is the moment of this force about this? It is clockwise. What is moment? Force into perpendicular. फर्स्ट मैं algebraic फॉर्म में बिना वेक्टर से कर रहा हूं, तो ये क्या होगा? 700 by √2 into 700 by √2 into, अरे force into perpendicular distance, इधर देखो ये perpendicular distance है, this is the sliding force, तो देखो ये sliding vector है, 700 by √2 into this, very good, ये √2 into 1.2 clockwise, ये clockwise है, very good. What is the, again you know, force is a sliding vector, इधर देखो force is a sliding vector, देखो ये फोर्स का मूवमेंट इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पे चाहिए आपको, इस पे चाहिए। एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 3। सो देयरफॉर दिस इज योर 700 by √2 इनटू दिस अगेन दिस इज क्लॉकवाइज, तो क्या होगा सर? बोथ आर क्लॉकवाइज, तो यू कैन ऐड। देखो इसीलिए 700 by √2 इज दिस फोर्स इनटू दिस लेंथ इज 3। दिस इज योर क्या है सर? वैरिग्नॉन्स थ्योरम से सेम आना चाहिए। कितना आ रहा है सर? ये एनीवन, ये √2 है सर। टोटल कितना आ रहा है सर? सर ये क्या हो रहा है सर? फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर नहीं दे रहे सर, मैंने तो मल्टीप्लाई करके दे दिया, फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर नहीं दे रहे सर, बहुत शर्म की बात है सर। ओनली राजवीर हैज गिवन, इट क्लियरली शोज दैट यू पीपल आर नॉट रेडी विद कैलकुलेटर्स। बहुत दुख लगता है सर, एक टीचर रात दिन बैठ के करता है क्वेश्चंस, लेकिन आप लोग सिर्फ टेबल पर बैठकर कैलकुलेट, मतलब लेट के सो के करें। वेरी सैड सर, आई एम रियली सॉरी, आई एम लूजिंग माय इंटरेस्ट इन टीचिंग यू पीपल। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस फोर्स? न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस यूनिट? मीटर। सो दिस विल बी 2079 न्यूटन मीटर। मैंने 78.8 को राउंड ऑफ कर दिया, दिस इज करेक्ट। शुड आई रेट इट एज प्लस और माइनस? शुड आई रेट इट एज प्लस और माइनस? मैं कुछ नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर में कर दिए। देखो मूवमेंट इज नॉट स्केलर, मैं अलजेब्रिक किया, बिना वेक्टर से किया, लेकिन मैं सेंस तो दिया। सेंस इज व्हाट? क्लॉकवाइज बोला मैं, क्लॉकवाइज बोला। यहां पर किसी को परेशानी है सर? एंड यू हैव कैलकुलेटेड, लिसन केयरफुली, यू हैव कैलकुलेटेड, डियर स्टूडेंट्स, यू हैव कैलकुलेटेड इंडिविजुअल फोर्स मूवमेंट अबाउट दिस। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई गॉट दिस। इज इट ओके? अब देखो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है सर? इसको रिजॉल्व किया, वी हैव रिजॉल्व। वन स्टूडेंट सेड, सर डोंट रिजॉल्व, व्हाटएवर सिंगल फोर्स इज देयर यू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दिस। तो व्हाट आई हैव डन इज, अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी फोर्स का मूवमेंट ले रहा हूं। एंड वैरिग्नॉन्स थ्योरम सेड whether you take individual forces and calculate or single resultant force you calculate, you should get the same answer. बोला या नहीं बोला? ट्राई करेंगे सर। अभी वेक्टर अप्रोच नहीं आया, वेट करो, फर्स्ट मेथड इज ओवर। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मेथड आई गॉट द आंसर एज 2079। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड मेथड। अभी भी वेक्टर फॉर्म में नहीं कर रहा हूं सर, क्या प्रॉब्लम होता मैं बताता हूं। अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं कर रहे तो क्या होगा? आंसर तो आएगा सर, लेकिन अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेगा तब प्रॉब्लम होगा। आई टेल यू व्हाट आर दोस। वेट लिसन सर। सेकंड मेथड what is this length? 3. What is this length? 1.2. Can I calculate by Pythagoras theorem this length? ये दोनों परपेंडिकुलर है, can I calculate?
Can I calculate, sirs? Can I calculate, sirs? Can I calculate? Let me calculate as per Pythagoras theorem this length. तो हम पॉइंट्स दे देंगे A, B, C. A, B, C. देखो, so what will be this length? Under root of Pythagoras theorem. At least you know this ना. At least Pythagoras theorem पता है ना. This square under root of this square plus this square 1.2 square is how much? It is AC. कितना आ रहा है सर? 3 point. Wonderful. So many meter. So many meter. Leave it. So many meter. ध्यान से सुनो सर. My question to you please. Can I calculate this angle? Can I calculate this angle? Yes sir. Yes sir. Tan theta is equal to, tan theta is opposite by adjacent, or sin theta is equal to opposite by hypotenuse, or cos theta is equal to adjacent. Everything will give me the same answer. Azad, क्या हो रहा है sir? So tan theta is equal to, what is tan theta? Dear students, opposite. Tan theta is opposite by adjacent. That is 3 by 1.2. What is the angle, sir? What is the answer? 68.2 लिखूं मैं? Shall I write it as 68.2 degree? तो ये angle आ गया. My dear students, can I calculate this angle? Can I calculate this angle? Can I calculate this angle? Anyone in the class? Total is 180. This total is 180. नहीं आ रहा सर. This total is 180. This total is 180. This total is 180. तो अगर ये नहीं आ रहा सर, समझ आ रहा है? So therefore, let this be some alpha. So can I write 68.2 plus alpha plus 45. 68.2 plus alpha plus 45. This plus this plus this. ये total बन जाएगा. देखो, this plus this plus this. This total will be horizontal line. तो 180 degree. 180 degree. तो anyone with alpha? 66.8. तो ये आ गया आपका. Wonderful, sir. Wonderful. आपको क्या चाहिए सर? I want this force. Is it a perpendicular distance? मोमेंट के लिए फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. Is it a perpendicular distance? पागल की तरह मत करना सर. पागल की तरह मत करना. ये फोर्स और इसमें 90 डिग्री नहीं है, तो कुछ मत करना सर. सुनो, लिसन. नहीं है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना. इधर देखो, परपेंडिकुलर. Any problem, sir? Any problem? अब ये एंगल क्या हो गया सर? ये एंगल क्या हो गया? Now focus on this triangle ACD. Anyone? ये परपेंडिकुलर हो गया? नहीं हुआ. तो can I say this is the force and this is the perpendicular distance? Can I say this is the force and this is the perpendicular distance? Can I say this is the force and this is the perpendicular? बोलो सर. Can I say this is the force and perpendicular distance? तो I will write moment of this force F about this point is equal to F into moment of this force about this point is F into AD. Yes or no? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं. Yes or no? Yes or no? Then how do I calculate this length? Anyone in the class? ये लेंथ कैसा कैलकुलेट करेंगे? नहीं आ रहा सर. इस लाइन के लिए हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए. इस लाइन के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए. Anyone in the class कितना रहा है? राजवीर, क्यों गलत आंसर्स देते सर? आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं आ रहा. तो ये लेंथ पता चल गया. तो अब देखो, दिस लेंथ इज नोन. आप लोग ना मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं सर. आई एम वेरी वेरी सॉरी. मैं ये ट्रायंगल ले लूंगा सर. ये ट्रायंगल ले लूंगा. इधर देखो, दिस इज वन, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द वन. Yes or no? Yes or no? How do I calculate? ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनस होगा. सो इसके लिए ये अपोजिट होगा. इस एंगल के लिए अपोजिट होगा. इस एंगल के लिए एडजेसेंट होगा. ये हाइपोटेनस होगा. कैन एनीवन टेल व्हाट इज दिस लेंथ AD? कैन आई राइट sin 66.8 is equal to sin theta is equal to opposite by sin theta is opposite by hypotenuse AC. That is 3. ये लेंथ है 3.231. What is the value of AD? Anyone? What is AD? 2.69. 2.96. I'm sorry. 2.96. 96. Correct meter. Can I calculate the moment of force into perpendicular distance? I want the moment of this force. ये जो force है about this point. Force into, देखो आप देखो. Please listen, my dear students. All of you, please listen. This is the force. It is a sliding vector. It is a force. It is a force. Force into, अब ये होगा perpendicular. देखो ये perpendicular. Force into perpendicular. AD. How much is AD? How much is AD? 2 point. Force is 700 into 2.96. Again, it is 2078.8 or 2079. And it is in what direction? This force is causing. देखो एक बार. This force is causing in clockwise direction. Is it clear, sir? Is it clear, my dear students? Is it clear, my dear students? Is it clear? Is it clear? Is the Varignon theorem satisfied? This is the individual resultant force. The moment of the resultant force about this, or components, individual components, is it the same? What is happening, Sri Hari? Didn't understand both that. I have not understood your problem. What is your problem, Sri Hari? What is your problem, Sri Hari? Sri Hari, what is your problem? I couldn't get your language. Which language do you want me to speak? Korean language? In the middle, I am using bit of Hindi. If that is also not understood, what can I do, sir? In the middle, I am just using a little bit of Hindi. I feel very sorry with you, So have you understood this? But I personally feel this is the complicated method. Yes or no?
we have to find out angles. Yes, Diksha ji, that's what I wanted to tell you. So from now onwards, finding out the perpendicular distance is a bit difficult task. That's why I rarely do this. Just to make you understand, I have gone for this method. Yes, here F is a single force moment about that point. And their components and moment about this point. Did we get the same thing? Did we get the same thing? Yes, we got the same thing. But which one was easy? Just by resolving this force into two components and taking moments about this was easy. Calculating this perpendicular distance was the toughest task. So from today onwards, just your teacher has made you understand which method is tough, which method is easy. So obviously, whenever you get an option to find out the resultant and solve, those who are very fast in calculating, it's okay. But otherwise, I always go for components and I take moments. So I'll be doing this method only. One student said, "Sir, you are very smart." I said, "Why?" "Sir, you have given only two methods. What about vector approach?" "I want vector approach. I want vector approach." Now you take. Now you'll appreciate beauty. Now, and I can tell you that the best is vector approach. You will be seeing this now. Please listen, sirs. Have you understood? Have you understood, my dear students? Now let me explain. Let me explain. Let me explain. Listen, sirs. Listen. Please listen, my dear students. What is moment about? I want moment about A. Where is the point of application of force? This is A. So I think we do this as B or C. Whatever it may be. Now this is case 3. Whatever it may be. Let us say this is 3. Okay, no problem at all. Now please draw the position vector. Listen carefully. How to draw position vector? Where do you want the moment? Where do you want moment? About point A. From that point, go to the point of application in the direction. From I want this now. It is something like your origin. It is something because I want about this point. About that point means that is my origin. From the origin, draw the position vector. Draw the position vector. Sirs, the arrow I am not in a position to see, so let me highlight. Can I draw the position? Can I write the equation of the position vector? Why I write A? I write position vector, which is nothing but vector AC. Vector AC. Can anyone write vector AC from the origin? Look at. Wait. So everything I'll clear. It is something like your origin. It is something like your origin. Okay. No problem. You tell me what is the position of C? What is the position of C? Look at. Where is this? From the origin, how much is the X value? How much is the X value? 1.2 is the X value. How much is the Y value? 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 Y from the origin up. From the origin up. So it is plus. Excellent. Excellent, sirs. Excellent, sirs. Any problems, sirs? Any problems, sirs? Any problems, sirs? Any problem? No. What is moment? It is the cross product of position vector and force. Any problems, sirs? Any problems, sirs? So I have written the vector, position vector F. Look at, sirs. Look at. Now, please listen, sirs. Please listen. I said. Just now you have resolved this into this component and this component. Correct? Correct or not? Correct or not? What is the value of this? It is opposite is sine. This is sine. So it is F sine 45. I'm not telling again and again. Again, say already we have done this. So what is the component of this in the vertical direction? Opposite is sine. My dear students, is it clear? And what about this? It is F cos 45. Is there any problem in understanding this? I've resolved this into two components. One is horizontal, one is vertical. Please tell me, is it clear? At least have you understood the resolution? This is horizontal direction. This is opposite. This is opposite. Opposite will be sine. So therefore I wrote sine. This is adjacent. Adjacent will be cos. Is it clear? So can we write this as 700 by root 2? Can I write this as 700 by root 2? Can I write this as 7? Yes. And what about this? What about vertical? 700. F is 700 and sine 45 is 1 by root 2. So now let me write the force vector. Fx. It is in the positive x direction. So it will be 700 by root 2I. And y is it plus or minus? Whenever you are going for vectors, direction is very important. If the direction is lost, it's something like this. So vector का direction अगर नहीं है तो simply validate. It's something like घर से कॉलेज जा रहा है या कॉलेज से घर आ रहा है. Is it not important, sir? Simply आप बोल रहे हैं घर कॉलेज. Is it घर से कॉलेज और कॉलेज से घर? Direction matters a lot. Whenever you are going for vectors, direction matters a lot. So now you tell me, is it plus or minus? Its y component is in the downward direction, so it will be minus 700 by, what is the value? By root 2j. Wait, sirs. Now, if I want the moment of this force about this point, force, yes, it is ready. Point, position vector about this point, the position vector is ready. Now you will understand. Please, my dear students, hold on. What is the position vector? It is 1.2i plus, anyone? Plus 3j cap. Correct? 1.2i plus 3j cap. And what is the force vector? What is the force vector? 700 by root 2i minus 700 by root 2 j cap. Is it correct? इसमें कोई k है सर? 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 आई जे मेरी ख्वाहिश है लिख रहा हूं सर. मेरा ख्वाहिश है. z में कोई नहीं है. मेरा ख्वाहिश है सर. What is moment? Moment is r cross f.
होप यू अंडरस्टूड। आई जे के, आई जे के, आर, पहले आर लिखो, आर 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 1.230, एफ एफ 700 by root 2 minus 700 by root 2, 0. Any problem, sir? Any problem? At least do you know how to multiply this vector? And what is the cross product? इसको बोलता हूं moment. About which point? About which point? About A. This is moment about A. But it is a vector. It is a vector. It is a vector. देखो, I into this minus J into this. या आ रहा है सर आपको? For example, at least you know how to multiply vector I into this minus J into this minus this plus K into this minus this. आ रहा या नहीं आ रहा सर? At least you know. अगर ये भी नहीं आया तो मैं माफी चाहता हूं सर, मैं आपके काबिल नहीं हूं, मैं एग्जिट हो जाता हूं सर। देखो, I into what is this? 3 into 0 0 minus this into 0 0 minus J into 1.2 into 0 0 minus 700 into 0 0 plus K into K. देखो K into this minus this. So therefore this 1.2 into minus 700 by root 2 minus 3 into 700 by root 2. Any problem, sir? Any problem, sir? Any problem? K into this minus this minus this. So now what is the value, sir? What is the value, sir? 0 0. So K cap. Okay, सरनेम पीछे रहता है, हम अंग्रेजी में नहीं लिख रहे। मार्क रुदरफोर्ड मार्क नहीं लिख रहे, मार्क रुदरफोर्ड। सो प्रवीण, आई एम नॉट राइटिंग कुलकर्णी, प्रवीण कुलकर्णी, पहले नाम, पहले मैग्नीट्यूड, उसके बाद वेक्टर, सो डायरेक्शन। तो देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 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 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इट इज 2078.8 K। अगर वेक्टर में ले रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कुछ मत बोलना, आप क्लॉकवाइज मत बोलो, एंटी क्लॉकवाइज मत बोलो, जस्ट लीव दिस वेक्टर। ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि इट इज इन द XY plane about what Z axis in clockwise direction। वेक्टर का ये होता है सर। I gave you three methods। You may be wondering why this poor fellow has been। अब मैं आगे ये सब नहीं करूंगा सर। Yes। तो एक बार थोड़ा देख लो सर, हम ना we always that is the problem with us, when you start taking minute details तब मजा आएगा। Anyone? First method देखो, x component of force iron into perpendicular distance, y component of force into perpendicular distance। ये तो वही है ना रे, वही है, वही तो आ रहा है। तो अब बोलो सर, बहुत केयरफुली देखो सर, what will be the moment of that force about another point? Will it be same or different? What will be the moment of that force about another point? मुझे आपको नहीं आ रहा सर, let me put it this way, what is the moment of this force about this point? This force into this particular distance, what is the moment of the same force about this point? Will it be same? No। मतलब ये moment vector अलग है, ये moment vector अलग है। Therefore whenever I say point is fixed, the moment is fixed, means my vector is fixed। That's why moment is a fixed vector। क्योंकि ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मोमेंट चाहिए वो फिक्स्ड वैल्यू होगा, सेम मोमेंट अलग अलग पॉइंट्स पे नहीं होगा सर, वो वैल्यू सेम नहीं होगा अलग अलग पॉइंट्स पे। दैट्स व्हाई एक पॉइंट फिक्स है तो मेरा वेक्टर फिक्स है। दैट्स व्हाई मोमेंट इज अ फिक्स्ड वेक्टर। जैसे समवन आस्क्ड मी, सर कैन यू गिव मी वन मोर एग्जांपल ऑफ अ फिक्स्ड वेक्टर? पोजीशन वेक्टर जैसा फिक्स है, मोमेंट वेक्टर इज आल्सो फिक्स्ड वेक्टर। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अगर दूसरा पॉइंट ले रहा भाई, yes exactly, अब देखो exactly इधर देखो, ध्यान से सुनो सर, प्लीज सुनो। so why I am giving this particular value? because this is the moment of that force, what just physically it represents, मतलब it has this much capacity to rotate about that particular point। if this value is more, the tendency to rotate will be more। if this value is less, the tendency to rotate is less। इसका मतलब है, इधर देखना, I will give you a simple example। if there is a hinge here and if this is the door, I apply a force here, इस फोर्स का इस पॉइंट पे मोमेंट इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा होगा, मे बी 2078। इसी फोर्स का अबाउट दिस पॉइंट मे बी 1212 फॉर एग्जांपल। इसी फोर्स का यहां पे मोमेंट कम होते जाएगा, इसी फोर्स का यहां पे मोमेंट जीरो होते जाएगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड द फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंट। इट गिव्स मी द टेंडेंसी टू रोटेट। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द हिंज, यहां पे हिंज है तो फोर्स यहां अप्लाई करो, शायद ये वैल्यू 2078 आएगा। अगर यही देखो, अगर इसी फोर्स का मोमेंट यहां पे चाहिए, कम होते जाएगा। अगर इसी फोर्स का मोमेंट इधर आएगा, फोर्स इज हियर, डिस्टेंस इज हियर, मोमेंट इज जीरो। सो हैव यू फिजिकली फेस्ड दिस? तो व्हाई आई गेव इट इन वेक्टर फॉर्म ना, कुछ एक्सेंट्रिक, कुछ अलग एग्जामिनर्स होते हैं डायरेक्टली, प्लीज ऑब्जर्व, डायरेक्टली वो वेक्टर फॉर्म में देंगे और पूछेंगे व्हाट इज द मोमेंट, ऐसा देख लेंगे। सर तो वेक्टर फॉर्म बताया नहीं, सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म बता के वो बोले वो वेक्टर है, वैसा है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स, इज इट अ फिक्स्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर? नहीं आ रहा सर समझ में। इज इट अ फिक्स्ड वेक्टर और फोर्स्ड वेक्टर? सॉरी, इज इट अ फिक्स्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर? इट इज अ फिक्स्ड वेक्टर। व्हाई? because at different points the value of that moment of force is different। that's why it is a fixed vector।
किस पोजीशन पे ही डिपेंड होगा ना, वही तो बोल रहा हूं सर। यस नीतीश, या यू मेड अ कंक्लूजन। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आएंगे, इंपॉर्टेंट। होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड व्हाट इज अ मूवमेंट। मूवमेंट के लिए मिनिमम कितने फोर्सेस चाहिए सर? मूवमेंट ऑफ अ फोर्स के लिए कितने फोर्सेस चाहिए सर? मूवमेंट ऑफ अ फोर्स के लिए कितने फोर्सेस चाहिए? मूवमेंट एक मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ये मत बोलना सर एक ही चाहिए, गलत। देयर आर सो मेनी फोर्सेस। फॉर एग्जांपल इधर देखो, देयर आर सो मेनी फोर्सेस। विल देयर बी मूवमेंट ऑफ दीस फोर्सेस अबाउट दिस पॉइंट? यस, हो सकता है। अगर कोई फोर्स ही नहीं है, व्हाट इज द मूवमेंट अबाउट? फोर्स ही नहीं तो मूवमेंट कहां आएगा? तो मिनिमम कितने चाहिए? मिनिमम कितने चाहिए सर मूवमेंट के लिए? एक फोर्स चाहिए, एक और मोर देन वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एटलीस्ट वन। नाउ कपल, अभी तक हम अकेले थे, अब क्या चाहिए? कपल कपल कपल। अभी तक सिंगल थे, कपल। मैं तो गाड़ी चलाना चाह रहा हूं सर, मैं तो गाड़ी चलाना चाह रहा हूं, मैं तो गाड़ी चला रहा था। देखो मैं क्या क्या कर रहा हूं, एक बार सोचो, एक बार सोचो सर, जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग। मैं तो गाड़ी चला रहा था, मैं तो बोतल ओपन कर रहा था, मैं तो पानी पी रहा था, फिर बोतल बंद कर रहा था, फिर नीचे उतर के टैप ओपन कर रहा था। ये क्या है सर? टैप भी बोल रहे हैं आप, बॉटल ओपन बोल रहे हैं और ड्राइविंग बोल रहे हैं। सर कुछ बोलने वाले हैं आप? कुछ आइडिया सेंस हुआ? इसको ओपन करो, एक ही फोर्स अप्लाई करके ओपन करो, एक ही फोर्स अप्लाई करके ओपन करो, करो 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 करो। देखो एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, इधर देखो, एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है। अरे यार कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बचपन में ओपन करने का कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन दैट्स व्हाई नेचर इज अ ब्यूटीफुल इंजीनियर, यू नो। बेसिक बोलते हैं इसको। कौन बताया आपको कपल है? ये तो कपल पता ही नहीं है। बचपन में जब मैं छोटा था, फर्स्ट क्लास में था, तो मैं बॉटल को तो ओपन कर रहा था। I was not having any concept of couple then, but still I opened the bottle. Oh, unknowingly we are studying so many concepts. Nature has inbuilt those things. Okay, so if a beam is heavy, then moment of its own weight. Okay, I'll tell you that in my strength of metals. Don't worry. Is it okay? Now couple. So for couple, see the difference between moment couple. Kuch hai? If there is any difference, if so, what is the difference? Suno, listen. Suno means listen, friends. Sri Hari. Suno means listen. I may be using the word frequently. Suno, suno, suno means listen. Suno means listen. In brackets you write Sri Hari. Sri Hari. In brackets you write suno means listen. I don't tell me that, sir. Every time he said suno, suno, suno. Suno is not a concept. Suno is just a Hindi word. Listen. No. Listen, sirs. Listen, sirs. See, I'm using so much of English, and fortunately or unfortunately, if I use somewhere English, Hindi, and you are complaining, it's not a healthy sign, you know. Certain basic things come, it comes naturally. Now, what is a couple? Please listen, sirs. Dear students, please listen. Now I'm giving you a beautiful concept of couple. Where is Sri Hari? Dear Sri Hari. Dear Sri Hari. Dear Sri Hari, where are you? Dear Sri Hari, I'm requesting you, where are you? Please come once. Sri Hari, please come once. Dear Sri Hari, it's a request. With folded hands, I'm requesting Sri Hari, please come. Dear Sri Hari, please come with folded hands, I'm requesting. Sri Hari, I'm still giving you time. Sri Hari, please come. Sri Hari. Where is he? Chalo. Listen, listen, listen. Listen, where is Sri Hari? Where is Sri Hari? Where is Sri Hari? And let me tell you one thing. I'm not talking about Sri Hari. Some people purposefully they come. Something. See, look at. They cannot comment on concepts or so because everything is going on beautifully. Because the flow of students. When I see comments of students, the flow of students. If someone is making negative comments, they will understand that this fellow is making purposefully. At least let us make it in a different way. So the different way is something like language. Dal dena. This is the way people are learning nowadays. This is the way people are learning. And karma is very dangerous. One day or other, it will come and hit your back. Don't worry. It will come and hit you. Please be careful, my dear students. See, if he is very serious about the subject, he would have stayed in the class and he would have asked. It's just to instigate and leave. Please listen carefully. Listen, sirs. These are the things. Be careful. Now, have a look at this. Let's see what is a couple. From the word itself, couple means two. Correct or not? Couple means two, pair. Yes, exactly. If there is something important, you find some way. But if it is a bahana, yes, let us take a system. Please listen carefully. बहुत interesting आ रहा है sir. बहुत interesting आ रहा है. There is a force acting. Please, now be serious. There is a force acting like this.
and there is another force acting like this, and say these two forces are separated by a distance d. Let this be f, let this be f. What is that we have taken, sirs? What is that we have taken? We have taken two equal, opposite, parallel. Please understand that. Are these two, you are forgetting one word, parallel. Can I say two equal, opposite, parallel? Is it correct? Two equal, opposite, parallel forces. Now you tell me what is the net force. You tell me what is the net force. I'm asking you one question. What is the net force? Zero. Yes. Some of the upward, some of the downward. So total upward, total downward. So therefore, total upward is F and total downward is F. So it is a vector quantity. Direction matters. So therefore, it is zero. So always remember that in a couple, the net force is zero. Moment में क्या net force zero है, sir? There was a net force of 700 Newton. While taking moment, there was a net force of 700 Newton. So we have taken the moment of that net force about some point. Hope you understood. Hope you understood. In couple, the net force is zero. In moment, the net force is not zero. First point. Is it okay? Is this okay, Sarji? Is this okay, Sarji? No. Look at us. Please listen. Please listen. I said listen. Net force is zero. Now, let us take a midpoint. One student said, sir, why are you taking midpoint? You take anywhere, Ray. One force is this, one force is this. What is the net force? See, one force in the same plane, one is this, one is this. What is the net force? Okay. Listen, sir, listen. So you will understand this very well. एक काम करता हूं sir. To make you understand, ऐसा करूंगा. Don't worry. There is one person here. Look at this. अब diagram मेरा सही नहीं है सर. अब मैं क्या करूं सर? One person is pushing. एक आदमी है यहाँ पे, उसके हाथ है ये, पुश कर रहा है, और दूसरा आदमी यहाँ से ये इसको पुश कर रहा है. Okay, one person is, they are applying same force. Look at, what will happen? Both are applying same force. Is it okay? Is it okay? Is it okay? What is the net effect? 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 Nothing. It will be in this position. What I do is, look at carefully. I will shift this person. Now what will happen, you tell me. He is applying with a force here. He is applying with a force. What will happen? So, please, my dear students, that's why mere net force zero does not tell whether the system is in equilibrium or not. You have to see the moment also, turning capacity also. In this case, it is trying to rotate. In this case, it is trying to rotate. Matlab, first it was in static condition, now it is trying to rotate. So definitely, it will not be in equilibrium. Yes or no, sirs? Yes or no, sirs? So if you see the net force, yes, in first case it was zero. Now also it is zero. One is in this direction, one is in this direction. But it's not the net force that is causing the rotation. It is zero, but they are separated by distance. It's simple, sir. It's simple. One is pulling you, other is pulling from back. लेकिन एक इधर आप हाथ ऐसा रखो, इधर रखो. एक उधर खींच रहा है, आपको एक इधर खींच रहा है. Even though the net force is zero, now you try to rotate. So please understand, for equilibrium, it's not just net force must be zero. The net moment must also be zero. Couple is a moment only. Now I will tell you, couple is a moment, but it is a special case of moment. You're not understanding, my dear students. Couple क्या है मैं बताऊंगा. All of you are getting this. All of you are getting, my dear students. All of you are getting. Listen carefully. For simplicity, please. अभी मैं couple define नहीं किया. What is couple? Then how to distinguish between couple and moment? And it's something like this way, पापा. वो एक ही family के है. कौन? Moment और couple एक ही family के है. Moment बड़ा term है. Moment का subset एक छोटा part couple है. नहीं समझ में आ रहा सर. It's something like this. Ideal gas. Ideal gas is perfect gas. You have a perfect gas, you have a semi-perfect gas, but both are ideal gases. Ideal gas is a big term. Semi-perfect and perfect उसके subsets है. समझ में आया सर? Sir, is this clear? Sir, this is clear. But due to अरे why अभी तो देखा, dear students, अभी तो देखा. Why is it turning? Why is it rotating? Nitish, you tell me. अभी तो movement पड़े ना. Why is it rotating? Why is it rotating? This force is separated by a distance, and it is separated by a distance. It is causing the turning movement. Yes or no? Yes or no? इसलिए मैं बोला first point, force has two effects. What are those two effects? Translation and rotation. Force का खासियत ये है वो.
Or translate, it can translate, it can rotate also. Got it now? Now, please observe, my dear students. Please observe, my dear students. Hold on here. Please observe, my dear students. Let me take midpoint. One student said, sir, why are you? So let me take this point as O. What is D, sir? Dear students, what is D? This is the distance between them. This distance is D. Can you tell me what is D? It is the separation between two forces. For simplicity, I take midpoint and I can take this point anywhere. Have you understood, sir? I can take this point anywhere. लेकिन यहां पे लेके देख रहा हूं सर, मैं इधर देखो, कंफ्यूज मत होना सर, मैं एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया रे, I take arbitrary point. I have taken an arbitrary point. Any problems, sir? No. Let this be. I said I want the movement of this force about. I used the word movement. क्या बोला मैं? Movement. You tell me what is the movement of this force about this point. Anyone in the class? What is movement? Force into perpendicular distance. So this for anyone, what is the moment of this force about this point? ये force about this point, it is turning. In which direction it is turning? In which direction it is turning? बोलो रे. In which direction? Clockwise or anti-clockwise? Clockwise. So can I say it is F into D by 2? तो ये जो force है यहाँ पे clockwise, clockwise होगा. Any problems? अरे यार, there is a force F, and this is point O, and this distance is D by 2. What is the moment of this force about this point? F into D by 2 clockwise. Okay. Now, what is the moment of this force about this? Because I have to take total moment now. I have to take total moment. This force C has a tendency to rotate about this point, and this force has a tendency to rotate about this point. Any problems? Any problem? Any problem? Any problem? Any problem? It is bolo sir. Any problem? F into again D by 2 clockwise. What is the total moment of these two forces about this point? Both are in the same sense. Both are in the same sense. So this will be FD by 2, FD by 2, FD. Excellent, sir. Is there any problem? Is there any problem, sir? Is there any, what does it mean? It means the net turning effect of these two forces about this point is FD. Can I write the turning effect about point O? ये तो moment ही है, ये तो moment ही है, about point O as FD. Any problems, sir? Any problems, sir? Any problems, sir? No, no. Now we'll do one thing. We'll do one thing. So already we have calculated the moment of these two forces about this point. Now I want to calculate the moment of these two forces about this point. Let me take it as A. Now we are calculating the moment of these forces about A. Listen carefully, sir. Listen carefully. Moment तो point पे depend होता है. Yes or no? Moment तो point पे depend होता है. Moment of this force is different at different points. Now look at carefully. What is the moment of this force about this point? F into D clockwise. Yes or no? ये इसको लिखेंगे सर. ये तो clockwise है. Already we got this. What is the moment of this force about this? F into D. It is clockwise. अरे moment of this force about this point. F into D. अरे एक second please. This is about point A. I'm calculating. F into D clockwise. Plus, what is the moment of this force about this point? Is there any perpendicular distance for this point? Is it causing any moment about this point? It is simply along this direction. What is the moment of this force? इसके लिए कोई perpendicular distance नहीं. इसके लिए सुनो carefully. इस force के लिए there is a perpendicular distance. इस force के लिए this is the perpendicular distance. For this force, what is the perpendicular distance? 0. So therefore 0. Again, it is FD clockwise. अरे यार. Okay. एक काम करेंगे सर. I'm not convinced. I'm not convinced. I'm not convinced. तो मैं क्या करूंगा? सुनो सर. मैं क्या करूंगा? I will take another point B. Let this distance be some x. Now I want the moment of these two forces about point B. I want the moment of these two forces about point B. Let us calculate this. Let us calculate this. About B. F into D plus x clockwise. नहीं आ रहा सर. What is the effect of this about this? F into, देखो, I am calculating moment about B. F, listen रे. F. About which point are you calculating? About D, about D. So F into D plus x, it is clockwise. And what is the moment of this force? I have to check total. I have to check total. There is a force here. I want the moment of this force about this point. This is F into x anti-clockwise. Anti-clockwise. F into x anti-clockwise. अगर एक प्लस लिए तो दूसरा माइनस ले लो. So therefore इसको माइनस ले रहा हूं सर. सर आप बोलेंगे सर अभी तो बोले आप क्लॉकवाइज नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. इसको माइनस लिखूंगा, इसको माइनस, समझ गया ना? सो जस्ट आई एम चेकिंग द मैग्नीट्यूड. जस्ट आई एम चेकिंग द मैग्नीट्यूड. समझ में आएगा? जस्ट आई एम चेकिंग द मैग्नीट्यूड. आई विल मेंटेन दैट सेंस सर. आई विल maintain that sense. I'm checking that magnitude only. So it's magnitude. If I take this magnitude plus, what will be this? What will be this? F into x. Listen. F into x. It is anti-clockwise. Okay. What is the value? This is anti-clockwise. What is the value? Anyone? What is the value? Anyone in the class? What is the value? What is the value? Fx minus fx is gone. Fd again it is clockwise. Actually it is minus sir. मुझे पता है minus. क्या observation है sir?
क्या ऑब्जर्वेशन है? Oh my God! Still it is a moment only. Still it is a moment only. But special moment. What is a special moment? Whenever two forces, two equal opposite parallel forces are separated by some distance, the moment of these two forces about any point is same. That is couple. Is it free? It has become free from all points. That's why it is a free vector. It has, because moment is depending on a particular point. It is fixed. एक एक point पे एक एक moment है. लेकिन please observe, couple is independent of that position. सिर्फ it depends on the distance. That is a free vector. कहीं पे भी moment ले लो, कहीं पे भी किसी point पे moment ले लो, everywhere it is same. That is the difference. मतलब ये भी moment है सर. Please सर आप लोग ना इसको क्या बोलूं सर मनीष को, पॉइंट्स को कोलिनियर होना जरूरी है. जब दोनों पॉइंट्स कोलिनियर है, कहां पे मूवमेंट आ रहा है सर? जब दोनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इक्वल अपोजिट, फोर्स भी सेम हो गया, कपल भी जीरो हो गया, तो कहां आ गया सर? अब समझ में आया दीक्षा जी? ये बोल रहा है कोलिनियर का मीनिंग ही नहीं पता आपको. कोलिनियर मींस अलोंग द सेम लाइन. व्हेन बोथ आर अलोंग द सेम लाइन, वेयर इज द टर्निंग मोमेंट? सो आज समझ में आया सर मूवमेंट और कपल में डिफरेंस क्या है. ये बोलना इंटरव्यू में सर मूवमेंट इज अ स्पेशल, सॉरी कपल इज अ स्पेशल केस ऑफ मूवमेंट, वेयरिंग फॉर मूवमेंट सिंगल फोर्स minimum one force is required, but for a couple two forces are required, and those two forces must be same, of same magnitude, but in opposite direction, and they should be parallel. समझ में आया? क्या कंक्लूजन स्टेटमेंट है? The conclusion statement is whenever two forces are equal and opposite and are separated by small distance, the moment of these two forces will be same everywhere. इसलिए कुछ याद है सर आपको? अगर हम कुछ कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट बताएं तो इसको एवरीवेयर, इसको स्लाइड करते जाओ, एवरीवेयर इट विल बी सेम. इसीलिए मैं बताया था, याद है? सो अगर आप मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एवरीवेयर इट विल बी सेम, एवरीवेयर इट विल बी सेम. यस अश्विनी, एग्जैक्टली. एवरीवेयर जब हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ किए थे, सो कपल का एवरीवेयर इट इज सेम बिकॉज़ इट इज अ फ्री वेक्टर. हर जगह वो सेम रहेगा, किसी पॉइंट पे ले लो वो सेम रहेगा. इज इट क्लियर सर? इज इट क्लियर सर? इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? शायद आपको मतलब इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं लेकिन नहीं आ रहा है सर. तो अब स्टेटमेंट पूछा है. व्हाट इज द स्टेटमेंट? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, opposite parallel forces are separated by a distance, the moment of these two forces about any plane point, ये तो हम एक प्लेन में ले रहे हैं, देखो, the moment of these two forces about any point is same. Is it clear? हाँ वहां पे भी शो करेंगे, 3D में भी. समझ में आया सर? Is it clear my dear students? कपल की एप्लीकेशंस क्या है? स्टीयरिंग, कैप ओपन कर रहा है, बॉटल ओपन कर रहा है. These are all examples. मयंक ने पूछा, प्लीज लिख इट. सो प्लीज मयंक, प्लीज ऑल ऑफ यू फोकस ऑन मयंक क्वेश्चन ऑफ मयंक. प्लीज सब लोग मयंक के क्वेश्चन पे फोकस करना. सर इफ फोर्सेस आर अनइक्वल स्टिल दे बी ट्राइंग टू रोटेट, देन व्हाई इट इज नॉट कंसीडर्ड इट एज कपल? गुड सर, क्वेश्चन समझ में आया? अब मैं आंसर दूंगा सर. कपल का मतलब है एक स्पेशल केस है सर, स्पेशल केस है. सुनो केयरफुली, सुनो केयरफुली, सुनो केयरफुली. इधर देखो रे, इधर देखो, इधर देखो. कपल इज नथिंग बट घुमाने का कैपेसिटी. दैट्स इट. मियां बीवी कपल घूमते ही रहेंगे, एक का फेस उधर, एक का फेस इधर, फिर भी साथ में ही घूमेंगे. वो इनका डायरेक्शन इधर, इनका डायरेक्शन इधर, फिर भी साथ में ही घूमेंगे. सुनो केयरफुली. नाउ ऑब्जर्व हियर प्लीज. मयंक का क्वेश्चन देखो, इधर देखो. What is the net force? What is the net force? What is the net force? Anyone? It is 70 नीचे, 100 ऊपर, तो नेट फोर्स इज 30 अपवर्ड. सो इसके पास दोनों कैपेसिटीज है. क्या कैपेसिटीज है? ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा. नेट फोर्स के कारण ट्रांसलेट करेगा और रोटेट भी करेगा. लेकिन कपल का, विच वन आई कॉल इट एज कपल? ओनली कपल जो रोटेटिंग टेंडेंसी देता है, नो ट्रांसलेशन, उसको ही बोलते हैं कपल. ओन सो इंटरव्यूज में अगर पूछेंगे तो कपल क्या वो ट्रांसलेट करने का क्षमता रखता है? उसको नहीं बोलते हैं हम कपल. एनीथिंग व्हिच रोटेट्स इज नॉट अ कपल. प्लीज बताइए सर, आप लोगों को समझ में आया सर? तो इसीलिए नेट फोर्स जीरो होना है. अगर नेट फोर्स जीरो होना है तो देन ओनली इट इज पॉसिबल कि बोथ शुड बी सेम. दैट्स व्हाई आई यूज. इज इट ओके सर? सर आप लोग ना, मैं क्या करूं रे आपको, क्या करूं रे आप, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है. इज इट क्लियर? सो कपल मींस इट हैज no tendency to translate. It has only capacity to rotate. That's it. The beauty of the couple is you take a moment. क्या बोलता है? देखो, beauty of
couple is just rotation, equal and opposite, net force is zero. Is it okay? Someone said, how do you know the net force is zero? अरे यार इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आपको कैसे पता नेट फोर्स इज जीरो? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है वो ट्रांसलेट नहीं करेगा। देखो एक बार, देखो अगर एक साइड ज्यादा दाब रहा एक साइड कम दाब रहा, इधर देखो, मान लो ये साइड ज्यादा दाब रहा, इधर देखो, ये साइड अगर ज्यादा दाब रहा हो तो क्या इधर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इधर देखो, इधर देखो। What does it mean? What does it mean? What does it mean? Force तो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, तो if one of the forces is more, it will translate, but it is simply rotating. It is simply rotating means both forces are equal. That means net force is zero. Is it clear? कुछ फीलिंग आ रहा है? तेरा क्या कमेंट है रे? तेरा क्या कमेंट है रे? हाँ, अब ऐसा क्यों कर रहे रे? इधर देखो, तू कपल के पीछे मत पड़ना, इधर देखो। It's like this. You are liking one person. इधर देखो, इधर देखो. You like the person as he is. वो ये बोल रहा है, उस पर्सन से वो निकालने के बाद मेरा हो जाएगा। ऐसा मत करो। ऐसा समझ में आ गया? आपका कमेंट मुझे समझ में आ गया। सो जो मूवमेंट का कंपोनेंट है, मतलब जो मूवमेंट का मतलब जो एक्स्ट्रा है वो निकाल दो तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्यों बना रहे हैं आप? फोर्सफुली क्यों बना रहे हैं? एनीथिंग फोर्सफुली इज नॉट ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड। थिंग्स शुड कम नेचुरली। मैं तो नेचुरली तो ऐसा करेंगे। इधर देखो, देखो तनुज, इधर देखो, पहले इस पे ज्यादा फोर्स डाल के इसको ट्रांसलेट करके फिर नेक्स्ट अप्लाई करके, ऐसा नहीं करेंगे ना। नेचुरली हम ऐसा करेंगे। समझ गए? यस नीतीश, नीतीश का स्टेटमेंट को सब तालियां मारो। कपल हैज टेंडेंसी टू रोटेट, नॉट टू ट्रांसलेट। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कपल। दैट्स इट। समझ में आया सर? क्या लेके आयो जग में, मेरा कमेंट एक बार, अब मैं वही करते बैठूं। Sir, that's why 245 and 150 are best position to hold the steering engine. Absolutely. और एक बार, या देखो, यस वो ये बता रहा है, क्या बता रहा है? टाइम, घड़ी का टाइम बता रहा है। समझ गए? यस एग्जैक्टली। वाह, मतलब बच्चे ना मैकेनिक्स में जी रहे, बच्चे ना मैकेनिक्स में जी रहे। थैंक यू दर्पण, थैंक यू दर्पण, मजा आया सर। ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे सब्जेक्ट, टीच कर रहे हैं। सब क्लियर कर दिया सर, ये पहली बार इतना क्लियर हुआ। थैंक यू, थैंक यू। नहीं देखो, डियर क्या बोलते हैं, डियर कौन है मेरा डियर? मैं कुछ नहीं है। अगर फोर्सेस इक्वल अपोजिट है तो ऑटोमेटिकली वो, और फोर्सेस इक्वल अपोजिट पैरेलल है, ऑटोमेटिकली वो कपल फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो मुझे 1 मिनट दीजिए, अभी आगा मैं। इज इट ओके? 1 मिनट दीजिए, अभी आया। जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो 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 चलो। चलो आगे बढ़े। जैसे में गया, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं आपके। हाँ हाँ हाँ, will be take, see always remember, we'll be taking the component of that force in that plane। अलग अलग प्लेन्स में कैलकुलेट करेंगे। ओके, विल बी टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स इन दैट प्लेन। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो नो कपल। समझ गए? वेट वेट वेट, ओके, अभी अभी मैं बता रहा हूं क्या कुछ बताने वाला था। आई वाज अबाउट टू टेल समथिंग।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला था। ओके चलो, यस यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आप ये कर रहे हैं, यस, एक इधर है एक इधर है, यस एब्सोल्युटली यस। नाउ शैल वी प्रोसीड सर? आराम से, टेंशन मत लेना। सो टिल नाउ होप एवरीथिंग इज क्लियर, टिल नाउ होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके सर, क्रिस्टल क्लियर? नहीं, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी है सर, सो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी है सर, क्रिस्टल क्लियर ना? देखो बेस्ड ऑन दिस, आराम से, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ओके कोई बात। नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या कमेंट है, यस, हाँ यस वे बाबा, इधर देखो। नो, फ्री बॉडी डायग्राम सर, आप तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, नहीं किया सर, नहीं किया सर, मैं नहीं करूंगा सर, नहीं करूंगा सर, डोंट वरी। फ्री बॉडी डायग्राम, and I'm sure that not just concepts when I take यस यस यस, हाँ देखो फ्री बॉडी, यस राहुल, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब बोलेंगे देखो सर, कितना प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू नाउ, यू आर गोइंग टू लव इट। कॉन्सेप्चुअल है ये, देखो क्या कॉन्सेप्चुअल है, देखो एक बार, इफ द हाइट डिक्रीजेस, इफ दिस हाइट डिक्रीजेस व्हाट विल हैपन टू टेंशन इन द रोप्स। कॉन्सेप्चुअल है सर ये, कॉन्सेप्चुअल है सर ये सब, लवली क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे बोला द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच द टेंशन इन द रोप इज मिनिमम, मतलब I have taken some wonderful questions, wonderful questions, wonderful questions, wonderful means यहाँ पे ड्रैग फोर्स कैलकुलेट कर रहा है, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए सर हम। यहाँ पे स्प्रिंग अटैच किए, और यहाँ पे देखो गुलेल का प्रॉब्लम है। सो वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस एंड you will definitely love those questions, मतलब एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एंड डेफिनेटली you will fall in love। अरे यार दूसरा फाइल कहाँ गया रे, दूसरा फाइल कहाँ गया रे, चलो एक सेकंड, डेफिनेटली बिकॉज just concepts are not enough, application is very important। now देखो, now it is a free body diagram, you tell me sirs, what do you understand with, हाँ प्लीज, डर अब नहीं होगा सर, मुझे लग रहा है कि मुझे, आई एम श्योर दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। अब देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद फ्री बॉडी डायग्राम, और क्यों कर रहे हैं ये बोलो। देखो देखो ऑलवेज, मतलब जो भी कॉन्सेप्चुअल हम करेंगे, लेट मी टेल यू हाउ मेनी क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डू दिस। 26 plus 7 is 33 plus 11, 33 plus 11 कितना है, 44 क्वेश्चंस सर, 44 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा सर, ओनली इन दिस चैप्टर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, नो डीपीपी, नथिंग इज रिक्वायर्ड। एक बार क्लास कर लेंगे तो पूरा इसी में आ जाएगा। अब मेरे से सर समवन इज गिविंग डीपीपी, सो डोंट कंपेयर मी विद समवन। व्हाट सब सेंड करूंगा रे, थोड़ा चुपचाप बैठो। कल पुष्पेंद्र जी से भी बात हो गई थी नोट्स के बारे में। सो डेली सम स्टूडेंट्स आर सेंडिंग डेली नोट्स, उनको मैं आई गिव इट टू पुष्पेंद्र, वो नीट डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे और आपको एक फीलिंग भी आ जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल में जैसा कि वैसा। हाँ देखो, आई सेड व्हाट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम, बोलो सर। सेपरेट ऑल फोर्सेस सेपरेटली, ऑल बॉडी को फ्री करके सेपरेटली ऑल फोर्सेस को दिखाएंगे। वेरी गुड, हाँ दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बॉडी। एक सेकंड रुको, हम क्या करेंगे ना, फैमिली का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर है, रिलेटिव्स का प्रेशर है। मैं क्या कर रहा हूं ना, सुनो केयरफुली, सुनो केयरफुली। मैं सेपरेट हो गया सर, आइसोलेट हो गया, दुनिया से बाहर गया, फ्री फ्री हो गया, फ्री हो गया, दुनिया से बाहर गया, हिमालय में बैठ गया, मैं हिमालय में बैठ गया सर, जाके एक गुहे में बैठ गया। प्लीज, कैमरा नहीं है मेरे पास, तो मैं बैठ गया, सुनो केयरफुली, और सोच रहा हूं तनुज कितना प्रेशर दिया मुझे, ललित कितना प्रेशर दिया मुझे, जॉब कितना प्रेशर दिया मुझे, ये सब मैं एनालाइज कर रहा हूं सर। क्यों सर, क्यों सर? क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दोस एक्सटर्नल फोर्सेस, विल आई बी इन इक्विलिब्रियम और विल आई गेट क्रश्ड, मुझे देखना जरूरी है ना सर। सो फ्री बॉडी, कैच माय वर्ड्स केयरफुली, फ्री बॉडी, डेफिनेटली आवर बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सो मेनी फोर्सेस। मुझे बताइए सर, किस बॉडी पे फोर्स नहीं है, बताइए सर। हम स्पेस की बात नहीं कर रहे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेस, हम तो इस दुनिया में है। बोलो, ग्रेविटी तो रहेगा ही रहेगा, ग्रेविटी तो रहेगा ही रहेगा, बाकी के छोड़ दो आप, लीव अदर थिंग्स, ग्रेविटी तो रहेगा ही रहेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेस। तो आई कैन टेल यू दैट देयर इज नो सिंगल बॉडी विदाउट फोर्स। अगर हम इस धरती पे है तो कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है जिसपे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है।
सब पे है सर। ऐसा मत बोलो मेरा वेट इतना है, ऐसा मत बोलो मेरा मास इतना है, बोल सकते ग्रेविटी इतना पुल कर रहा है, ये बोलो ग्रेविटी इस फोर्स से पुल कर रहा है मुझे, बोलना सही है, करेक्ट और नॉट? ग्रेविटी इज पुलिंग मी विद दैट मच फोर्स, ग्रेविटी इज पुलिंग मी विद 700 न्यूटन, माय मास इज 70 kg बट ग्रेविटी इज पुलिंग मी विद 700 न्यूटन, अगर जी को मैं 10 लिया तो। वेरी गुड सर। अब एक सिंपल एग्जांपल लेके फ्री बॉडी पे जाएंगे, एक सिंपल एग्जांपल लेके फ्री बॉडी पे जाएंगे, उसके बाद देखो वो देखो रे बाबू, इसका फ्री बॉडी बनाएंगे सर। देखो एक बार, देखने के बाद ही डर लग रहा है आपको, देखो एक बार इसका फ्री बॉडी बनाएंगे, उसके बाद व्हाई डू यू वरी, एक एक कॉन्सेप्ट मिलने के बाद और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, व्हाई डू यू वरी, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे रे, मैकेनिक्स विल एंजॉय, क्या गलत है? हील शू डालने के बाद मुश्किल क्या होता है देख लेंगे हम, ऐसा चप्पल डाल जूते डालने से ऐसा देने से क्या दिक्कत है, बनाएंगे सर, क्या दिक्कत है? वाई फनी सर, वाई फनी, चलिए प्रोसीड। हील वाले प्रॉब्लम पहले ले लेना, तो पहन ले, चलो वो देखेंगे प्रैक्टिकली कितना रिएक्शन आ रहा है उस पॉइंट पे, अगर हील है तो कितना, हाउ मच रिएक्शन इज कमिंग एंड वो कैसा ट्रांसमिट हो रहा है बॉडी को, हम देख लेंगे सर, समझ गया ना? प्लीज अब नाउ लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। फ्री बॉडी डायग्राम, it is a diagram which shows various forces acting on, it is the diagram which shows various forces acting on the body after separating or isolating। आइसोलेशन का मतलब पता है, कोविड आ गया, आइसोलेशन, आपको सेपरेट कर दिया सबसे, समझ में आ रहा है सर? आपको फ्री कर दिए, सबसे फ्री कर दिए। फ्री बॉडी का मतलब वी आर रिमूविंग, वी आर फ्रीइंग द बॉडी फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट्स, नहीं ऐसा समझ में? दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्री बॉडी, बॉडी को फ्री करो सभी कॉन्टैक्ट से। अब देखो फॉर एग्जांपल, ये देखो, ये है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है ना, है इसको फ्री कर देना, कर दिए, देखो मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा, कर दिए, देखो, समझ गए? सो वी आर फ्रीइंग द बॉडी फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट्स, showing it is a diagram which shows forces acting on the body after isolating, ये स्पेलिंग ISOLAT आपको सही दिख रहा है, after isolating or separating the body from all contacts। now अब बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे का मतलब बाहर से ही एक्ट कर रहे हैं, ऑन द बॉडी बोला तो एक्सटर्नली है, समझ गया ना? कॉन्टैक्ट से मतलब बाहर से ही आ रहा है ना, अरे now there is a problem, if there is no contact will there be any external force? There is no contact, still do you find any external force? Yes, gravity contact नहीं है मतलब फिर भी is pulling it। तो हमेशा याद रखना, वेट को मत भूल जाना, डोंट थिंक दैट वेट इज इंटरनल, गलत, इट इज एक्सटर्नल। Shall I proceed, my dear students? With your permission, shall I proceed? With your permission, shall I proceed? Excellent students of India. First, let us take the simplest case of a free body diagram. इससे simple नहीं होगा सर, इससे simple नहीं होगा, लिख के रख लेना। A block is kept on the floor. इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर और इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। आर यू रेडी? तो व्हाट डिड आई से सर? फर्स्ट क्या डालना है सर? वेट। फर्स्ट क्या डालना है? वेट। वेट को डालो पहले, वेट को डालो, तो डालो का मतलब है शो करो। सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम, किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम? ए का बना रहे हैं। सो टेक दिस एंड सेपरेट दिस। देखो एक सेकंड, सेपरेट दिस, सेपरेट कर लिए, सेपरेट कर लिए, ध्यान से सुनो। सेम बॉडी, आई हैव सेपरेटेड दिस, वेट
वेट, मैं आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर में सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ वॉल्यूम सारे ब्यूटीफुली बताऊंगा. Don't worry, okay? Don't worry. Is there any difference between center of gravity, center of mass, center of volume? All these I'll be explaining because एक मेरा chapter होता है center of mass. Actually, in our syllabus it is not mentioned clearly. लेकिन मैं उसके भी concepts दूंगा सर आपको. सुनो सर, don't worry. Who is pulling this? Earth. Earth. So this is the free body diagram का मतलब होता है it is the diagram which shows various forces acting on the body from surroundings. मेरे बॉडी के ऊपर क्या क्या फोर्सेस है, that is the free body diagram. मैं क्या कर, मान लो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, what I am doing ये इंटरेस्ट नहीं, बाजू के क्या कर रहा है वो मैटर करना है. So that's why I focus on the word on the body. That's why I focus on the word on the body. It is the diagram which shows forces acting on the body by surroundings. मतलब जो भी कांटेक्ट में है, whatever it may be. सराउंडिंग का मतलब इधर देखना, देयर इज एन सराउंडिंग का मतलब ये मत सोचना देयर इज एन ऑब्जेक्ट हियर, इज इट एक्टिंग एनी, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, एक बॉडी है, सिंपल बॉडी है, इज इट एक्सर्टिंग एनी फोर्स ऑन दिस? नो. अगर कांटेक्ट में आ रहा है तो करेगा. इट्स समथिंग लाइक दिस. समझ आ गया ना? ओके, सुनो सर, आई हैव सेपरेटेड, प्लीज लिसन. ग्रेट. Its weight will act in vertically downward direction. Any problems, sir? Any problems, sir? Any problems, sir? Any problems, sir? Absolutely no. Absolutely no. No problem at all. Now, contact निकाल दिए तो ये सरफेस ओपन हुआ, ये सरफेस ओपन हुआ या नहीं हुआ? फर्स्ट इट वाज लाइक दिस, देखो फर्स्ट इट वाज लाइक दिस, अब ये फ्रेश ओपन हुआ. एक्सीलेंट. अब बताइए सर, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. व्हाट इज दिस बॉडी ट्राइंग टू डू टू द ग्राउंड? ये ग्राउंड को क्या कर रहा है? इसके वेट के कारण, मतलब ग्रेविटी के वेट के कारण ये नीचे दबा रहा है, ये नीचे दबा. इट इज exerting a force. This body is exerting in downward direction. And as per Newton's third law, forces occur always in pairs. If this is exerting like this, will it keep quiet? Will it keep quiet? Will it keep quiet? Will it keep quiet? It will not keep quiet. It will return it immediately. तो क्या करेगा? It will exert in the opposite direction. Which force I have to show on this block? इस block पे मैं क्या show करूं? The force exerted by the ground on the body. Body is exerting down, so ground is exerting in upward direction. And this is our, dear students, ये मेरा, अरे now one student said, sir, the contact is here, all forces are coming now. I have resolved, I have composed all those forces into a single force, and this I call it as normal reaction. Why do we call it as normal reaction? क्योंकि उस surface को normal होगा, क्योंकि जब contact ऐसा है तो obviously if the contact is like this, the force cannot come like this, it will come only in the perpendicular direction. इस surface को normal होगा. That's why we call it as normal reaction. For example, if the body is something like this, look at, if it is something like this, the reaction will be normal. इस surface को normal होगा. That's why we use the word normal reaction, normal reaction. Now this is the free body diagram. इससे simple हो ही नहीं सकता. Now the question that comes to our mind is this body? So what is R? Can anyone tell what is R? Sentence में बोलो. It is the force exerted by the ground on the body. And I want a free body diagram on the body. Yes, on the body. One student said, sir, weight is internal na? Dear. Weight is external, says, on the body. The earth is exerting on the body to pull towards its center. So can I call these two forces external forces? Can I call these two forces external forces? No one is commenting. Can I call these two forces external forces? External forces, external forces. Yes, this is external. This is also external. And how are these two forces? They are collinear. They are collinear. And is it in equilibrium? Is the body in equilibrium? Yes, it is in equilibrium. Whenever it is in equilibrium, net force should be zero, net moment should be zero, net force should be zero, net moment should be zero, net force should be zero, net moment should be zero. If the moment is not zero, it will have a turning tendency. It will not be in equilibrium. If the force is not zero, net force is not zero, it will either move in upward or downward. In the resultant direction of force, it will try to translate. नहीं है ऐसा समझ में आया या नहीं है? So is it a collinear force? Are these collinear? Yes, they are passing through same line of action. Therefore, what is the moment? Zero. There is no moment. And what is the net force? It is in equilibrium. So therefore, total downward is equal to total upward. So free body diagram draw करने के बाद, after drawing free body diagram, you will try to understand whether the body is in equilibrium or not. If it is not in equilibrium, how much force or how much movement is required to bring it to equilibrium? That's why we are drawing this. Is it clear? Is it clear, my dear students? क्या ये बात सभी को समझ में आई? Now, I'll give you some golden points. I'll give you, this is a simple case. So धीरे धीरे से simple से हम tough की तरफ जाएंगे. Let us take block on block. There is a block and there is another block. Say this is A and this is B. दोनों और ये ground है. दोनों का free body diagram बना लेंगे.
ये मत सोचना कि हमेशा दोनों का बना रहे। यू कैन सेपरेटली ड्रॉ फॉर ए, यू कैन सेपरेटली ड्रॉ फॉर बी, और यू कैन ड्रॉ फॉर बोथ टुगेदर। नहीं आया समझ में? आया या नहीं है? अब ब्यूटी दिखाऊंगा सर आज आपको, इंटरनल फोर्सेस कैसे कैंसिल होते हैं। एक्सलेंट नीतीश। तो इस केस में यस एग्जैक्टली आलू, तो बोलने के बाद भी फिर वो पूछ रहा है। तो इधर देखना सर, हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडीज। यस, वेट इज एक्सटर्नल, रिएक्शन इज एक्सटर्नल। ये रिएक्शन कहां से आ रहा है सर? कहां से आ रहा है? फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द बॉडी। नाउ एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एनी प्रॉब्लम सर? देन एनी प्रॉब्लम सर? नो 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 नो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। समझ में आ रहा है सर? देन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। समझ में आ रहा है सर सभी को? प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, हैव यू फॉलोड? So let us try to draw the free body diagram of A, free body diagram of D, free body diagram of AB together, AB together, AB together. तो इसीलिए मैं when I'm drawing AB together, this complete system is in contact with what? Ground. हटा दिया। Is it okay? बिल्कुल बना सकते सर, क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते सर? बिल्कुल बना सकते सर। अरे यार, सिस्टम इज व्हाट? इन थर्मोडायनामिक्स यू हैव स्टडीड सिस्टम। मैं सराउंडिंग्स को भी सिस्टम ले सकता हूं, क्योंकि अगर मेरा फोकस सराउंडिंग्स पे है, समझ में आ रहा है ना? सो यू कैन ड्रॉ व्हाट इज योर सिस्टम, इट मैटर्स। आपका सिस्टम क्या है ये मैटर करता है। इधर देखो सर, अब देखो, प्लीज लुक एट, प्लीज कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। अब देखो ब्यूटी, प्लीज प्लीज लिसन केयरफुली। नाउ यू टेल मी, कूल रहो आप, कूल रहो, कूल रहो, कूल रहो, ठंडा ठंडा कूल कूल। फर्स्ट क्या ड्रॉ करना है सर? फर्स्ट क्या ड्रॉ करना है सर? इस बॉडी पे अर्थ पुल कर रहा है। ग्रेट ग्रेट। अच्छा थोड़े इंट्रिकेट ब्यूटीज देखेंगे, मतलब माइन्यूट डिटेल्स थोड़ा देखना जरूरी है सर टुडे। ओके, एनी प्रॉब्लम सर? इज इट अ कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम? इज इट अ कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम? नो, दिस इज इन कांटेक्ट विथ anyone in the class, this is in contact, anyone in the class, this is in contact with what? This, forget about this, कंफ्यूज मत होना सर। क्या मेरा ये बॉडी ए ग्राउंड पे कांटेक्ट में है? तो ग्राउंड नहीं आएगा। माई बॉडी ए इज नॉट इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, ग्राउंड नहीं आएगा बॉडी ए के लिए, बॉडी बी के लिए ग्राउंड आएगा। देखो ब्यूटी, ऑटोमेटिकली सेल्फ करेक्शन कैसा होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ करेक्शन? आई विल टेल यू। नाउ लुक एट, व्हेन दिस बॉडी इज बीइंग लाइक, अब ये बॉडी क्या कर रहा है? वेट के कारण नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली वेट के कारण नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली इट विल प्रेस। व्हेन इट इज प्रेसिंग, व्हाट इज दिस डूइंग? जब ये प्रेस कर रहा है तो ये क्या कर रहा है बोलो? जब ये प्रेस कर रहा है, is it going down? No, it will exert a reaction in the upward direction. Any problems sir? देखो 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 देखो, can anyone tell what is R1? Please इस पे फोकस करना। Can anyone tell what is R1? It is the force exerted by B on A. तो क्या A चुप बैठेगा सर? जितना रिएक्शन फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, जितना A एक्सर्ट कर रहा है तो तुरंत ये क्या करेगा सर? What will A do? Whatever this reaction is, please weight को भूल जाओ, weight को some other one is pulling, you forget about weight, you forget about weight, someone is pulling it, उसको छोड़ दो। तो अगर ये रिएक्शन एग्जर्ट कर रहा है, if this is moving down, मतलब ऐसा पुल कर रहा है, तो this yellow body is pushing it up, when yellow body is pushing up with R1, what will green body do? With same force it will push it down. So please my dear students, please my dear students, don't show WA is, someone is pulling, only reactions। तो यहाँ पे सिर्फ क्या दिखाना है? यहाँ पे सिर्फ क्या दिखाना है? R1, क्योंकि एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट। इफ दिस ग्रीन बॉडी इज पुशिंग इट डाउन, येलो विल पुश इट अप। तो व्हेन येलो इज पुशिंग अप विद R1, ग्रीन विल आल्सो पुश इट विद R1 ओनली। प्लीज टेल मी, ये समझ में आया सर? जैसे ही कभी भी याद रखना, कांटेक्ट में जो है एक का डायरेक्शन आ गया तो दूसरे के लिए कोई ऑप्शन नहीं है बट ऑपोजिट। So when both are in contact, when one direction is known, other will be equal and opposite, because forces occur in pairs as per Newton's third law of motion. Please tell me, is it clear? Please tell me, is this clear? I'm not showing WA here. देखो देखो, I'm not showing WA here. WA, someone is pulling it. WA का कुसूर इसमें नहीं है. WA को someone is pulling it. But please observe, as both are in contact, when yellow is pushing it up with some force, with the same force, this green will push. No. Is the free body diagram of this yellow complete? No, no, no. Wait, Amarsh, कुछ beauty आएगा. Is the free body diagram? No. And you forgot one thing. On this yellow body, our Earth is. On this yellow body, our Earth is. Earth सिर्फ उसी बॉडी, इस पे अर्थ का जो है उसी फोर्स एक्ट करेगा इस पे, इट इज WB. Is it complete? 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 No. Why? Why, sir? Why? Because when this is in contact with this,
अब देखो ये क्या करेगा सर, ध्यान से सुनो, ये क्या करेगा, जब ये बॉडी इसको पुश करेगा तो ये ग्राउंड सरफेस क्या करेगा, ग्राउंड क्या करेगा, इसको ऊपर पुट करेगा. सो आई रिपीट सर, when this is exerting a force in downward direction, my ground will not keep quiet, ground will exert in upward direction. I don't know how much it is, it will be something like this. Let it be R2, don't worry, let it be R2. Is it clear? Is it clear, my dear students? Let it be R2. Is the free body diagram complete? Is the free body diagram complete? Is the free body diagram complete? Yes, it is complete. अब बताइए सर, what is R2? Anyone in the class, what is R2? Anyone in the class, what is R2? अरे यार, I'm not asking plus minus, आप वही कर रहे हैं. So please, mathematics anyone can do. First physically you feel it. देखो, what is R2? Anyone in the class, what is R2? मैं R1 R2 addition नहीं पूछ रहा हूँ. What is R2? It is the force exerted by ground on body A. What is R1? This R1. There is a difference between this R1 and this R1. I'm not talking from magnitude point of view. What is R1? It is the force exerted by body A on body B. What is R1? It is the force exerted by body B on body A. Confuse मत होना सर ये दोनों से. अब देखो, it is in equilibrium. Can I write WA is equal to R1? Can I write WA is equal to R1? इधर देखो. Sum of the upward, sum of the downward. इधर देखो. R1 plus WB is equal to R2. But what is R1? WA plus WB. Why नहीं सर, ये टोटल वेट नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली द ग्राउंड विल सपोर्ट. ग्राउंड रिएक्शन देखो एक बार, ग्राउंड रिएक्शन जब टोटल नीचे आ रहा है ऑटोमेटिकली आ गया या नहीं? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ऑटोमेटिकली आ गया या नहीं सर? Now please listen. Is it clear? Now let me try to draw the free body diagram of this. यहां तक प्लीज बताइए आपको समझ में आया सर? प्लीज पागल की तरह ये वेट इधर मत ड्रा करना. वेट अर्थ इज एक्सर्टिंग, प्लीज ये बॉडी इस पे नहीं करना. प्लीज अंडरस्टैंड करो. एक गोल्डन पॉइंट समझने की कोशिश करना, पागल की तरह. ये यहां पे सर, यहां पे वेट भी है ना, वेट पागल की तरह मत करना. दिस प्लीज अंडरस्टैंड, वेट ये दोनों किसके कांटेक्ट, प्लीज बताइए. ए और बी कांटेक्ट में, ए बी आर इन कांटेक्ट. तो यहां पे कौन एक्सर्ट करेगा सर? यहां पे कौन एक्सर्ट करेगा? ओनली द वन व्हिच इज इन कांटेक्ट. तो देयरफॉर R1 ही दिखाया. बट दिस W है पूरे बॉडी का फोर्स इधर दिखाया सर. दिस R1 इज फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस. प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली. ये R1 वेट एक्सर्ट नहीं करेगा, R1 रिएक्शन एक्सर्ट करेगा. प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? Is it clear? नहीं है ऐसा समझने. अरे यार ये वेट बोलो रे, आया या नहीं आया सर? प्लीज बताइए, आया नहीं. अब दो ड्रॉ करो. इधर देखो. नाउ लुक एट केयरफुली. व्हाट इज दिस? अब इस सेपरेट कर दिया सर. इस बॉडी पे कौन एक्सर्ट करेंगे सर? इस बॉडी पे कौन एक्सर्ट करेंगे? एनीवन इन द क्लास, इस बॉडी पे कौन एक्सर्ट करेंगे? अर्थ. इस बॉडी पे कौन एक्सर्ट करेंगे? इस बॉडी पे. एंड इसको ओपन कर दिए तो यहां पे क्या होगा सर? डेफिनेटली दिस कंप्लीट सिस्टम इज एक्सर्टिंग फोर्स लाइक दिस, द ग्राउंड विल एक्सर्ट इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द कंप्लीट. आप बोलेंगे सर वेयर इज R1 R2? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, R1 R2 आर इंटरनल. ये अंदर की बात है. अगर बॉडी ए को सेपरेट किए तो बी वाला एक्सटर्नल होगा. इफ आई सेपरेट इट समथिंग लाइक, लुक एट केयरफुली. If I separate this is my body. For body A, this is external. That's why I have shown external force. And similarly, if I take this body will be external to this. Now I take both. ये पूरा मेरा सिस्टम हो गया. तो ये क्या होगा सर? ये अंदर की बात है. So always remember carefully, internal forces cancel with each other. नेट इधर देखो, R1 R2 नेट यहां पे दिखाएंगे. R1 R2 क्या होगा? जीरो होगा सर. R1 ये ऊपर ये नीचे, यहां पे ऊपर नीचे नेट विल बी जीरो. इंटरनल forces is always zero. There is only external force. समझ में आया? इसीलिए I have not shown because they are internal. Now इसीलिए प्लीज बताइए सर, आप लोगों को समझ में आया? So net internal forces are zero, my dear students. Net internal forces are zero. सिर्फ एक्सटर्नल बचेंगे. कितना समझाए तो भी नहीं आ रहा सर आपको. तो यहां पे कोई इंटरनल फोर्स नहीं है सर. देयर आर नो इंटरनल फोर्स, ओनली एक्सटर्नल. अब बोलो WA प्लस WB नेट डाउनवर्ड इज इक्वल टू R2. वही तो आया या नहीं है? एग्जैक्टली इट विल बी द सेम माय अंक. कुछ भी कर लो आप, नेट वही आएगा. प्लीज टेल मी, आर वी क्लियर? नो बोल रहा है ललित, नो बोल रहा है ललित, नो बोल रहा है. क्या नो है रे? ऐसे क्लिक गया. नाउ हैव अ लुक एट दिस. कभी भी याद रखना, आई टेक जस्ट 5 मिनट्स एंड क्लोज इट. कभी भी याद रखना सर, whenever you are taking equilibrium क्या क्या देखना पड़ेगा सर? whenever you are checking equilibrium क्या क्या देखना पड़ेगा सर? अब बताइए, अब लॉजिक से चलो. यस,
whenever you are checking for equilibrium, what are the things that you need to check? One is force, one is movement. One is force, one is movement. You have seen, sir, आप सिर्फ फोर्स चेक करेंगे, कैन आई गारंटी इक्विलिब्रियम? मैं सिर्फ फोर्स चेक कर रहा हूं, कपल देखो, कपल में नेट फोर्स वाज 0 बट स्टिल इट वाज टर्निंग. So mere looking at forces is not enough. So that's why net force, one student said, sir, I will check net force in x direction only. Galat. Net force in x direction, y direction, z direction. Net movement in all directions should be 0. Please tell me, is it clear, sir? Please tell me, is it clear? See the beauty here. See the beauty here. So here, all are passing through same point. There is no question of movement. There is no question of movement. So therefore, since you have to check forces, are there any horizontal forces here? No. So that's why horizontal force is already 0. Horizontal force, there is no force, already it is 0. Already it is satisfying. वो तो use कर लिया already it is 0. Now you have to check only the vertical direction. There is no need for you to check movements because all are passing through same point. When all are passing through same point, what will be the movement? For example, I'll tell you, sir, Suno. I'll tell you, Suno. There is a force here, there is a force here. What is the movement of all these forces about this point? There is no perpendicular distance. समझ में आया सर? Now, that's why now last point बोल के आज close करूँगा. सुनो carefully. Dear students, इधर देखना, इधर देखो सर. We are dealing with coplanar. पहले coplanar करेंगे. Assume that in the same plane there are forces like this. ये मत सोचना कि हमेशा. What these are? I'm dealing with coplanar. I'm dealing with coplanar. What type of force system is this? How do we know that all they pass to same point? अगर नहीं है तो moment आएगा ना. Concurrent forces. Look at this. Let this be F1. Let this be F2. Let this be F3. What is the moment of this force? अरे नमूने, movement कभी भी याद रखना, कहीं पे भी ले सकते हैं आप, कहीं पे भी ले सकते हैं. Let me take moment about this point. कोई ऑब्जेक्ट कर सकता सर? कोई ऑब्जेक्ट कर सकता सर? करने वाले दम है तो आइए. You can take moment anywhere. तो यहां पे ले लूंगा. What is the moment of this force about this point? There is no perpendicular distance. It is passing. तो इसका moment 0 है. What is the moment of this force about this point? What is the moment of this force about this point? ये भी 0 है. There is no perpendicular distance. What is the moment of this force about this point? ये भी 0 है. इसीलिए concurrent force system में there is no need for you to check for moments. Moments will be 0. You have to check only for forces. Whenever the force system is a concurrent force system, moments will automatically be 0. One student said, sir आपने तो यहाँ चेक किया, यहाँ चेक करो. अरे यार एक पॉइंट पे अगर मूवमेंट 0 होता है तो हर एक पॉइंट पे 0 होगा. एक बार चेक कर लेना. For example, इधर देखो, प्लीज लुक एट हियर. मैं एक बात बताता हूं. लेट W लॉजिक बताता हूं, सुनो. लेट WA be 20, WB be 50. सो R2 कितना होगा सर? WA is 20, WB is 50. तो ये कितना होगा? 70. तो यही फिगर ले लो. इधर देखो. एक 20, एक 70, सॉरी, एक 50 और एक 70. What is the moment of these forces about this point? Anyone? What is the moment of these forces about this point? Anyone? 20 into 0, 50 into 0. Yes. 0 होगा. इस पॉइंट पे 0 होगा. एक स्टूडेंट ने पूछा है, सर आप बहुत चालाक है, इस पॉइंट पे तो 0 होगा, मुझे पता है. इस पॉइंट पे कैलकुलेट करो. देखो एक बार. What is the moment of this 20 plus let us say this is some 15. 20 plus 50 is 70. 70 into 15 is anti-clockwise. 20 plus इसका अरे यार 20 into 15 anti-clockwise. 50 into 15 is anti-clockwise. ये anti-clockwise and this will be clockwise ना. Automatically 0 होगा ना. एक पॉइंट पे अगर 0 हुआ तो everywhere it will be 0. तो इसीलिए समझ में आया सर सभी को? Have you understood, my dear students? नहीं आ रहा सर. Have you understood, my dear students? अरे moment of this force about this is 20 into 15 anti-clockwise. This is 50 into 15 anti-clockwise, and this is 70 into 15 clockwise. Net will be 0. It means ये मत बोलना सर you have taken about this point. You take anywhere, you'll get the same result. इसीलिए मैं बता रहा हूँ. Whenever the force system is concurrent force system, you just have to check for forces. अगर forces balance हो गए तो automatically वो equilibrium में रहेगा. Moments का check करने की जरूरी नहीं है. कभी भी याद रखना. For concurrent force system, there is no need for you to check moment. Automatically for concurrent force system, moment तो 0 हो ही जाएगा. समझ में नहीं आ रहा सर? मोमेंट तो 0 हो ही जाएगा. सिर्फ आपको फोर्सेस चेक करना है. अगर नेट फोर्स, मुझे बताओ सर, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में क्या हो सकता सर? विल देयर बी रोटेशन? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में विल देयर बी रोटेशन? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में विल देयर बी रोटेशन? नो सर. अगर ये बॉडी ले रहा है, देखो ब्यूटी देखो. नाउ आई एम शोइंग यू द ब्यूटी. लेट दिस बी अ बॉडी. इमेजिन लेट दिस बी अ बॉडी. यस, लेट दिस बी अ बॉडी. मान लो ये तीनों का नेट फोर्स 0 है. इमेजिन तीनों का नेट फोर्स 0 है. व्हाट डू यू मीन बाय नेट फोर्स 0? यू टेक द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस अपवर्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस अपवर्ड, द टोटल वर्टिकल ऑफ दिस is equal to downward balance होगा. मान लो similarly this in the horizontal direction, इसका component in the horizontal, there is no horizontal component for this, horizontal component of this, horizontal component of this, let us say it is equal. So leftward rightward is same, upward downward is same, it will be equilibrium. Imagine that ये तीनों का एक रिजल्टेंट है, वो 0 नहीं हुआ. मान लो तीनों का रिजल्टेंट 0 नहीं हुआ. आ रहा है या नहीं आ रहा सर? हो सकता नहीं हो सकता. डोंट से दैट एवरी टाइम इट इज 0. मान लो तीनों का रिजल्टेंट, इमेजिन तीनों का रिजल्टेंट हैज कम लाइक दिस. इमेजिन आई विल टेल यू So I will tell you how the resultant is to be calculated. मैं बताऊंगा. तीनों का resultant ऐसा आया, समझो क्या होगा सर?
क्या होगा? Simply already movement is zero. Simply this body will translate in this net force direction. Simply for याद रखना सर कभी भी for coplanar force system, if there is a net force, it will translate in that net force direction. It will not rotate. सर ये सब इंट्रिकेट पॉइंट्स है सर. These are all beautiful golden points है सर. सर एग्जाम में ये आएंगे सर. प्लीज बताइए, आर वी क्लियर? हाँ, नेट फोर्स मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो. अगर नेट फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो ट्रांसलेशन. आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. सुनो लास्ट पॉइंट सर, आज थोड़ा मूड में है. एक सेकंड, सुनो सर, सुनो रे, मजा आएगा. लास्ट पॉइंट. बताइए सर, these are anyone in the class coplanar parallel force system. These are coplanar parallel force system. Don't worry, I'll tell you how to find result. ये सब बताऊंगा सर. Coplanar parallel flow system. क्या-क्या चेक करना है सर इसमें? क्या-क्या चेक करना है सर? What are the things that you need to check? दोनों को सिंपली मूवमेंट बोलता है. देखो, मूवमेंट बोलता है, दोनों को चेक करना है सर, दोनों को चेक करना है. फॉर एग्जांपल, सुनो केयरफुली. फॉर एग्जांपल, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस. देयर मे बी नेट मूवमेंट, देयर मे बी नेट फोर्स. अगर नेट मूवमेंट भी बचा, नेट फोर्स भी बचा, तो इट विल रोटेट एंड ट्रांसलेट. If the net force is zero and if there is a movement, it will rotate. If the net force is zero, net movement is zero, it will be in equilibrium. ये सब हम देखेंगे सर. Because in parallel, the both are separated by distance. अगर किसी पॉइंट पे लिए तो there may be a movement. इसका clockwise, इसका anti-clockwise. अगर total clockwise is equal to total anti-clockwise, it will be in equilibrium. समझ में आया सर? These are the golden things. And in the next class, Saturday, Sunday we have off. And in the next class, we are going to witness something great. Is it okay? Something great. समझ में आया सर सभी को? समझ में आया सभी को? All of you, have you followed? Is it okay? हेलो. या ललित बोलो. हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं मतलब सॉरी बोलना चाहूंगा सर. एक्चुअली जब मैं उसके डाउट पे नहीं हंसा था, जो आपके जो बोलने का टोन था ना, अरे यार तो उस स्टाइल पे हंसा था सर. जब आपने वो पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट किया था ना 30 एंगल, तो पे नहीं सर, आपके एक्सेंट पे सर हंसी आई थी सर. ओके, कोई दिक्कत नहीं. एंड सर आज पहली बार बहुत ही जो माइन्यूट चीजें, और जैसे कपल का और जो छुपी हुई जो चीजें थी, बहुत अच्छा लगा सर. मतलब थैंक यू बेटा. ओके, मूंगफली लग रहा है सर. मूंगफली, वाह. सर, और वो अब मेरे को समझ में आ रहा है सर, जब अभी कार ड्राइविंग के टाइम पे एक दो बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने वो स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन बताई थी ना, कि अरे यार यहाँ पे एकदम कंफर्टेबल फील हो रहा है, तो पर आज क्लियर हो गया कि क्यों ऐसा हो रहा है इस पोजीशन पर ही. ठीक है, ओके सर, बाय सर. डॉक्टर नीतीश. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग नीतीश भाई. सर पहले तो मैं सर आपको थैंक्स बोलूंगा सर, क्योंकि इतना अच्छा सर एक्सप्लेन कर रहे हैं सर हर एक हिडन एरिया को सर, एकदम गजब लग रहा है सर. सर लेकिन सर इसमें एक डाउट है सर, कि वो जो सर आप एफबीडी के लिए सर जो ड्रॉ किए सर रिएक्शन फोर्स और बॉडी फोर्स सर, वो कैसे पता चल रहा है कि सर सेम लाइन ऑफ एक्शन में आ रही है? ओके. जनरली क्या होता है ना, एक्चुअली जनरली हम होमोजेनियस बॉडीज लेते हैं और एक सिमेट्रिक बॉडी लिए. ये सब चीजें आपको तब क्लियर हो जाएंगे जब मैं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ वॉल्यूम ये बताऊंगा. सो एज ऑफ नाउ यू अज्यूम दैट दे आर पासिंग थ्रू सेम लाइन ऑफ एक्शन. उसके बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है ना? गजब चल रहा है सर, एकदम परफेक्ट सर. एकदम लग नहीं रहा कि सर आपका सर ये फर्स्ट टाइम लग रहा है सर, बहुत पुराना सर, लाइक थर्मो सर आपका ये सब्जेक्ट है. थैंक यू. ओके, यस सर, थैंक यू सर. बाय. चलो, युवराज भी आ गए, हमारे युवराज सिंह आ गए, हमारे राहुल भैया भी आ गए. आवाज आ रही है? हाँ बोलो बेटा. हाँ जी बोलो. यस आई कैन हियर यू, प्लीज गो अहेड. हाँ सर, गुड मॉर्निंग. एक छोटा सा डाउट है सर. एक्चुअली यहाँ पे जो जब कपल का डेफिनेशन आप बताएं, तो ये तीन बात तो जब इक्वल एंड अपोजिट जब हम लोग बोल दे रहे हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो फिर पैरेलल वहां पे वर्ड क्यों एक्स्ट्रा ले रहे हैं? अच्छा, तो हालांकि छोटा सा डाउट है, लेकिन लगा कि ऐसा अगर पैरेलल नहीं होगा ना, वहां पे ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों भी आएंगे. कपल में सिर्फ रोटेशन के लिए देख रहा है. अगर वो एंगल पे चल रहा है तो यू हैव फोर्सेस इन अदर डायरेक्शन, देयर मे बी अ नेट फोर्स, इट मे ट्रांसलेट. कपल देखो, एक डेफिनेशन है, मुझे ये चाहिए, अब यही क्यों चाहिए आपको, समझ में आ रहा है ना? सो इसलिए मैं उसको ट्रांसलेशन को अवॉइड करने के लिए पैरेलल लिख चुका हूं. इज इट ओके? यस सर. और एक दूसरा पॉइंट जो मयंक भाई ने क्वेश्चन पूछा था ना सर, कि जो सेंटर ऑफ रोटेशन है उसको हम लोग फिक्स कर दिए, और जो दोनों फोर्सेस हैं दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में वैसा क्या होगा सर? हालांकि उसको कपल तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसमें होगा क्या? उसमें क्या है ना, जहां पे एक्सिस फिक्स किया वहां पे रिएक्शन आएगा, तो वो समझ गए ना? यस या ओके. ओके. और कोई है भैया? राहुल. चलो, मूंगफली. थैंक यू. हेलो. हाँ गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग.
सर एकदम मूंगफली बना दिया आप मैकेनिक्स को। थैंक यू सर मुझे एक चीज शेयर करनी थी सर, आपका कंसेप्ट डिलीवर मतलब करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू। सर जैसे सर मूवमेंट में सर आपने रोटेशन बताया था, तो आपने सर पहले एंगल फाइंड करना बता दिया, पहले रिजॉल्व करना बता दिया, तो सर उस कंसेप्ट को डिफिकल्ट लगा ही नहीं सर, लगा मतलब लगा बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। बट सर उसको अगर ये सब भूल के देखो तो बहुत डिफिकल्ट लगता है कि एक ही चीज में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वही रिजॉल्व करना, वही एंगल फाइंड करना। तो सर आप पहले वीपन दे देते आधे से ज्यादा, फिर उसको एक्सप्लेन कर देते हो, फिर कहते फाइट करो, तो वो वही तो है ये। देखो थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ऐसा लगता होगा कि लाइक क्यों ये सब बता रहे हैं, लेकिन मुझे पता है लिंक क्या है। सर एक चीज और शेयर करना है। हाँ सर जब मैं पहले मतलब अपने से छोटे बच्चों को या जूनियर को कोचिंग पढ़ाता था या समझाता था, तो इजीली सर कंसेप्ट लेके समझा देता था। बट सर अब आपके जैसा करता हूँ कि पहले सर उन्हें विपन दे दिया, मतलब हर चीज का बेसिक बेसिक बता देता हूँ, फिर उन्हें जब समझाता हूँ ना तो सर वो खुद इजीली समझ जाते हैं। वो उसका रीजन आज मुझे समझ आता है कि वैसा क्यों होता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू बहुत सर थैंक यू सर, मैकेनिक्स सर बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू थैंक यू। एक सेकंड, कोई ये पूछ रहे थे ग्रुप का लिंक। एक सेकंड, लेट मी शेयर ग्रुप लिंक। लेट मी शेयर ग्रुप लिंक। कहाँ गया है? एक सेकंड प्लीज, लेट मी शेयर। अरे ईएम का कहाँ है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं मिल रहा है। एक सेकंड, आई एम शेयरिंग द लिंक। अभी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप का लिंक, सो दैट नोट्स भी डाल दूंगा उसमें। आई शेयर नोट्स। तनुज ने भेज दिया। क्योंकि ना इफ दीज थिंग्स आर अंडरस्टूड ना, एक सेकंड, आई एम शेयरिंग द ग्रुप लिंक, ज्वाइन कर लेना। आई एम शेयरिंग द ग्रुप लिंक। चलो ज्वाइन कर लेना। सो आई हैव शेयर्ड द लिंक आल्सो, नोट्स आ जाएंगे उसी ग्रुप में। ओके, सो होप यू आर हैप्पी। खुश हो कि नहीं? बोलो रे बाबा, बोलो रे, खुश हो कि नहीं? नितेश, आजाद, बस दोनों ही खुश है, बाकी के लोग खुश नहीं है। चलो बाय, थैंक यू। चलो ओके देन, राइट, बाय।